So I know some of you have seen some of these slides, but maybe not in this context, the way I'm going to explain. So मुझे पता है कि आपने बहुत सारे लोगों ने ये जो स्लाइड है पहले देखा होगा, बट मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी बताऊंगा उस कॉन्टेक्स्ट में आपने कभी देखा नहीं होगा इसको. So any type of traditional business has a certain system. So हर एक ट्रेडिशनल बिजनेस का है ना एक सिस्टम होता है. Any company you take, like Coca-Cola, like L'Oreal, like any company that you know that many of us use their products, you know, this is their system around the world. कोई भी प्रोडक्ट आप दुनिया का जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, लॉरियल का शैम्पू रहो या कोका कोला हो या और कोई भी प्रोडक्ट रहो, उनका ये एक सिस्टम रहेगा और ऐसा ही वो सिस्टम सेम रहता है. So it starts from the manufacturer, the company itself, and then they have all these middle brokers that have different duties to do. So ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग से ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट होता है सिस्टम का और धीरे-धीरे इसमें अलग-अलग सेगमेंट्स होते हैं. And then there is a lot of the money budget goes for advertising because people will not know about the products if they don't get advertised. तो बहुत सारा पैसा जो है एडवर्टाइजमेंट्स में जाता है यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा विदाउट एडवर्टाइजमेंट ये है क्या. And why does advertise continue all the time? Ongoing advertisements of the same companies. Why do they do it? ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो है बार-बार टीवी पे रिपीटेटिवली क्यों होता है? The first reason is because to get new customers. फर्स्ट रीजन जो है नए ग्राहक जो है नए कस्टमर्स लेने के लिए होता है. The second reason is to remind people who have used the products of this company before to remind them to repurchase. तो सेकंड रीजन जो है वो रीपरचेस के लिए होता है, मतलब जिन्होंने पहले यूज किया है उनको रिमाइंड करने के लिए होता है एडवर्टाइज. We all know advertisement is a type of brainwashing people. You put it in front of them, they hear it all the time. The ads on YouTube, the ads everywhere. So ये जो है ब्रेन वॉशिंग का काम करता है एडवर्टाइजमेंट्स. बार-बार YouTube पे आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, टेलीविजन पे आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं. This is how the traditional business system works. ये ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम जो है ना इस प्रकार काम करता है. The second type of business there is in the world is called direct sales. कुछ एक दूसरा टाइप का जो बिजनेस है पूरी दुनिया में उसे कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग. Direct sales is has a big plus for the associate and for the customer. डायरेक्ट सेल्स जो है वो एक प्लस पॉइंट है एसोसिएट्स के लिए भी और वो क्लाइंट्स के लिए भी. Why? Because the company doesn't use a lot of brokers. They don't use brokers in the middle. तो कंपनी जो है अलग-अलग ब्रोकर्स को बीच में नहीं लाती है यहाँ पे. That's why it's called direct sale. इसलिए इसे डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं. So there is the company, the manufacturer, the associate or distributor, and the customer. So यहाँ पे बस 3 पॉइंट है, कंपनी है, एसोसिएट है और कस्टमर है. That's it. What is the advantage? Instead of paying a lot of people salaries in the middle between the manufacturer and the customer. So एक एडवांटेज यहाँ पे क्या है ना, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जो भी लोग हैं उनको सैलरी जो है वो यहाँ पे नहीं होता है. Here they don't have to do it because most of the money that is earned goes to the associate. तो यहाँ पे जो भी पैसा वहां पे जा रहा है तो वो डायरेक्टली एसोसिएट के पास अकेले के पास जा रहा है. Right? If you take an example, a can of Coca-Cola. तो अगर मैं कोका कोला के कैन की अगर मैं बात करूं, how much do you pay MRP when you buy a can or a bottle, a small bottle of Coke? How much do you pay? आप कितना रुपए भरते हो एक छोटा सा अगर आप बॉटल कोका कोला का लेते हो तो? I mean, I don't know. How much does it cost? 60 rupees, sir. How much? 60 rupees. 60. Yeah. So you pay 6. Maybe that's a big bottle. The small bottle is how much? Small is 20 rupees, 30 rupees? Yeah, 20 rupees. 20 rupees. Around 30 rupees. The manufacturer, to make the product cost them in the beginning around 1 to 1.5 rupees. The manufacturer, when they make it in bulk. So कोका कोला जब बल्क में बनेगा वो छोटा सा बॉटल रहेगा 20 रुपए का, वो उसका 1 से 2 रुपए में वो बॉटल बनता है. And then they have to pay all the people in the middle. और वो बीच-बीच में जो लोग हैं ना सब लोगों को उनको अमाउंट And then the retailer, the one who sells the Coca-Cola bottle, hardly makes any paisa, nothing, a few pennies they get. और जो दुकानदार आपको जो कोका कोला, the reason is because most of the money the company, the manufacturer wants, and the rest of the money goes to the research and development. ज्यादातर जो पैसे रहते हैं वो आपके मैन्युफैक्चरर को चाहिए रहते हैं और बहुत कम जो रहता है वो रिटेलर को मिलता है. Now even the product might be not very valuable. शायद आपका वो जो प्रोडक्ट है उसका कुछ मूल्य नहीं होगा. But still the customer pays a high price compared to the value of the product. पर फिर भी
बहुत हाई बहुत ज्यादा दाम देता है, उसका वैल्यू उतना नहीं रहता है, because the company has to give salaries to all those people who are earning money, all these people in the middle. So the customer pays everyone's salary. तो कस्टमर जो है वो सारे मिडिल मैन को जो बीच बीच में पैसे लेते हैं ना, सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सैलरी देना पड़ता है, including the advertisement और एडवर्टाइजमेंट के का भी उनको ही जेब से आता है, and the profit of the company. और प्रॉफिट जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो भी कस्टमर ही पे करता है. That's how traditional business works. In direct sales, big advantage. ये नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे चलता है. डायरेक्ट सेल्स में इसमें बहुत फायदा होता है. You get value for what you pay. आप जो पेमेंट करते हो उसका पूरा वैल्यू आपको मिलता है. Because if the company doesn't do advertisement, how will the company grow? अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी तो कैसे ग्रो होएगी कंपनी एक? The product has to be amazing. It has to give results. तो एक ही तरीका है कि प्रोडक्ट का जो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए क्वालिटी. That is why the company invests a lot of money in research and development. They take good people who are very smart, very qualified to make their own products. तो प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी का बनाने के लिए कंपनी है वो सबसे बेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा ज्यादा डालती है डॉक्टर्स के ऊपर बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए. And then when people actually use, like associates who just join that company, start using the product, the results they get, they can share with other people. और जिस तरीके के रिजल्ट उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद लोगों को आते हैं तो वो रिजल्ट वो और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं. Now, advantage for an associate that they can have as many customers as they want. एक एसोसिएट का फायदा ये है कि वो जितना ज्यादा चाहे उतने कस्टमर बना सकता है. Khushbu, I think Shreyas is back. You can continue. ओके. Thank you. So an associate can have as many customers as he wants. So एसोसिएट जो है ना कितने भी कस्टमर्स जितना चाहे उतने बना सकते हैं यहाँ. Plus, they earn also very good percentage compared to any other type of business. और वो उसका परसेंटेज जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस के कंपैरिजन. Because the company doesn't need to pay all the people in the middle, only the associate. क्योंकि कंपनी को सब लोगों को बीच में जो भी है उनको पैसा देने का जरूरत ही नहीं है, बस एसोसिएट को देना है. And when the customer pays for the product of that company, they get value because that product is backed by research and development. और वो क्लाइंट को जिसको हम कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं उसको वैल्यू मिलता है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है उसके पीछे बहुत ज्यादा साइंस जो है ना उसको दिमाग लगा हुआ है. What is the disadvantage in direct sales? डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है डायरेक्ट सेल्स में? Is that there is only one source of income for the associate. तो वहां पे एक ही सोर्स ऑफ इनकम है एसोसिएट के लिए, which is retail. जिसे हम कहते हैं रिटेल. Right? There are two problems when you have only one source of income. वहां पे दो प्रॉब्लम्स होते हैं जब हमारे साथ एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है तब. Number one, how many customers can you have? Even if you are the best in the company, you can have 100, 150 customers, but you will be working so hard. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप ज्यादा से ज्यादा कितना कस्टमर बनाएंगे, 100-150 कस्टमर बनाएंगे, बट आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसकी. You will make great retail profit. You will buy a nice car, you can buy a nice home, you will have money, but you will always have to work for money. क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिटेल की बात करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा पैसा रिटेल से भी कमा सकते हो, बट आपको मेहनत भी उतना रोज करना पड़ेगा, 100-150 कस्टमर का फॉलोअप लेना. But let's say you are that associate and you are making great incomes and now you want to break, you want to take vacation. तो लेट्स सी टेक एन एग्जांपल कि आप ही वो एक एसोसिएट हो, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं 100-150 और बट आपको वैकेशन लेना है. You want to go to 8, 9, 10 days to Krabi in Thailand. तो आपको 8-10 दिन क्राबी जाना है थाईलैंड को. What will happen when you come back? Half your customers are gone. वापस जब आप थाईलैंड से आते हो तो क्या होगा आपके कस्टमर्स का? आधे जो है वो छोड़ के चले जाएंगे. You were not there to take care of them, to provide the products, to answer their questions. राइट? तो आप उनको प्रोडक्ट्स देने के लिए आप वहां पे नहीं रहोगे, उनके जो फॉलोअप्स है, उनको जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए आप नहीं रहोगे. So you are limited in the amount of money you can make and you are limited in the amount of freedom you have. तो आप जो फ्रीडम है उसके लिए भी आप लिमिटेड हो जाते हो और आपके पास जो वक्त है या जो टाइम है उसके लिए भी आप लिमिटेड रह जाते हो. Then we have network marketing. तो उसके बाद आता है नेटवर्क मार्केटिंग कांसेप्ट. What we deal with.
हाँ, जो जिसके साथ हम डील करते हैं रोज। So when you are in network marketing and if you are an associate, you have now the option of having your own customer base. तो आप जब यहाँ पे बिजनेस में हर्बलाइफ पे जब आते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका खुद का एक कस्टमर बेस रहेगा। Right? You can have your own 10, 15, 20, 30, 40, as many customers as you want or you're able to take care of. आपके जो भी कस्टमर्स रहेंगे 10, 20, 50 तो उनका आप टेक केयर कर सकते हो। By the way, when we say 30, 40, 50, it's easy to say it, but you need to work hard to achieve it. जब हम बात करते हैं 30 कस्टमर 50 कस्टमर, वो हम बात करने के लिए इजी है, बट उनका फॉलो अप लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। It's not difficult, it's hard work. You need to work hard. हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। You have to talk to a lot of people every day. There is no holiday when you are building a business. तो आपको बहुत सारे लोगों को रोज बात करना पड़ेगा, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं रहेगा। When you ask anyone who's starting their own business, they don't take days off. They don't take holidays because they are building the foundation. They are starting the business. They have to give it enough of momentum so something is done. If every time they leave the business for festival, for vacation, for break, nothing will be built. आप अगर कोई दूसरे बिजनेस की अगर बात करो तो कोई भी छुट्टी नहीं लेता है बिजनेस, जब भी उनका ग्रोथ मोड में रहेगा। एक मोमेंटम उनको बिल्ड करना पड़ता है पहले। ऐसा नहीं कि दिवाली आ गया तो छुट्टी ले लिया, ये फेस्टिवल आ गया तो छुट्टी ले लिया। ये ऐसी चीजें अगर वो करेंगे तो कभी उनका बिजनेस ग्रो ही नहीं होगा। So to achieve 30, 40, 50 customers and more every single month is very doable because so many in India have those numbers. A lot of customers. Some of them are doing Herbalife part-time. So 30, 40, 50 कस्टमर बनाना कुछ आपको ज्यादा तक प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंडिया में कर रहे हैं और कुछ लोग जो है पार्ट टाइम में कर रहे हैं। They are just talking to a lot of people. They have priorities are different for them. तो बस एक ही चीज है कि वो बहुत ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। They wake up in the morning, they don't think about, okay, what do I cook for today? तो जब भी वो उठते हैं सुबह तो ऐसा सोचते नहीं मैं आज क्या खाने में बनाऊं। They decide their plan of action for today. That's the first thing they think about. वो उनका तो जैसे ही वो उठते हैं उनका पूरा दिन का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो उसके बारे में सोचते हैं। They don't think, oh, I have to do this call to my relative, to my friend. Oh, I have to. No. Their priorities are completely different from the average person. उनकी जो प्रायोरिटीज है वो अलग होती है, जो एवरेज पर्सन है उससे अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसको कॉल करना है, मुझे वो भाई को कॉल करना है, ऐसी चीजें वो नहीं करते सुबह। Because you're a business person and you are starting a new business. So you have to be willing to do some extra work that the other person is not willing to do. So आपका एक बिजनेस है, आपको जानना जरूरी है और आपको वो एक्स्ट्रा चीजें करना भी जरूरी है जो आपको करना चाहिए रोज। The good news, even if in the beginning you are struggling a bit with getting your new customers, you can still create a great business. So ये गुड न्यूज यहाँ पे एक है कि आप धीरे धीरे भी अगर कस्टमर्स बना रहे हो बट फिर भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो। Because at the same time you are learning how to create new customers and how to take care of them, you can start introducing people to the opportunity, new associates. आप जैसे रिटेल कर रहे हो, अलग अलग कस्टमर्स बना रहे हो, उसी के साथ साथ आप रिक्रूटमेंट जो है वो भी ऑप्शन जो है आपके पास रहेगा जिससे आप लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। And you are creating a future income for yourself. और आपका फ्यूचर इनकम जो है उसका आप पौधा धीरे धीरे लगा रहे हो यहाँ पे। Right? Because when you start introducing people to the business, some of them are going to turn out to be serious. क्योंकि आप जब रिक्रूटमेंट करते हो, कुछ लोगों को बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दिखाते हो, तो कुछ लोग वहां से सीरियस होने लगते हैं। And what is even better, when you start introducing people, they have the same right to introduce new people themselves. एक और चीज यहाँ पे बेनिफिट क्या है हमको कि जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आपकी टीम में आते हैं, उनको भी वही राइट्स है कि वो भी आप उनके फैमिली या उनके जो फ्रेंड्स है या बाकी लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हैं उनके बिजनेस में। Because it's going to benefit them when they start recruiting. क्योंकि उनको ही उसका फायदा होने वाला है जब वो रिक्रूटमेंट भी चालू करेंगे। When a new associate starts introducing new associates, they don't see the immediate incomes. जब नए एसोसिएट्स रिक्रूट करते हैं तो इमीडिएट इनकम वो देख नहीं पाते। Because you know the marketing plan, or most of you understand the marketing plan. If you are in the same discount level, there is no profit. There is no wholesale profit here. आपको भी पता है कि यहाँ पे मार्केटिंग प्लान में अगर आप देखेंगे एक ही लेवल पे अगर दोनों रहेंगे, एक नया एसोसिएट्स आपका जो है फॉर एग्जांपल 35% है, दूसरा But it doesn't matter. That person is going to be your associate. He's connected to you. When you start moving up in the levels, doesn't matter when,
The minute they are doing any type of business, you are going to be paid every month of the company. सो आपका कौन सा लेवल है वो मैटर नहीं करता है, बट जब भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे उनके लेवल में और आपके लेवल में एक डिस्टेंस रहेगा, डिफरेंस रहेगा, और वो आपको हर मंथ में आपको होलसेल चेक बड़ा बड़ा देता रहेगा. Right? So the minute you are introducing people, you are starting your network. So, जब भी आप यहाँ बिजनेस में काम करते हो, रिक्रूटमेंट चालू करते हो, तो आपका धीरे धीरे एक नेटवर्क फॉर्म होना शुरू हो जाता है. So if you are now, you have decided, okay, I want to build this business. सो आप अगर डिसाइड करते हो मुझे बिल्ड करना है बिजनेस, So you are working on number one, building your customer base, तो पहली बात तो आप कस्टमर बेस आपका खुद का बना रहे हो, but making sure you're introducing new people to the business that can do what you do. और एक और चीज आप करते हो इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन करते हो नए लोगों का ये बिजनेस में, मतलब जो आप कर रहे हो वही आप उनको सिखा सकते हो. What do you do? आप क्या करते हो? You build the customer base and you introduce new associates. आप कस्टमर बेस बना रहे हो और नए एसोसिएट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो. So when you have a few associates starting to do exactly what you are doing, your network is going to grow. So जब आपके कुछ एसोसिएट जो है वही काम करेंगे जो आप कर रहे हो, धीरे धीरे आपका नेटवर्क जो है बढ़ने लगेगा. Remember, because of the marketing plan, we don't get paid for introducing people. तो ये मार्केटिंग की प्लान में अगर आप उसकी मैं अगर बात करूं तो खाली लोगों को यहाँ पे जोड़ने का काम नहीं करते हैं, Because that is an illegal form of business. It's illegal in most countries in the world. क्योंकि एक इलीगल काम है. To make money when someone joins, that's like chain, that's like those gold coins, crap, all these nonsense people do. तो ये ऐसा चेन मेकिंग, मंगलसूत्र वगैरह ऐसी जो स्कीम्स होती है, कुछ लोगों को जुड़ाओ खाली और पैसे कमाओ, ये हमारे पास बिल्कुल नहीं होता है. This is a real business. When do you know when it's a real business? तो रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये. एक रियल बिजनेस उसको क्या किस चीज को बोलते हैं? रियल बिजनेस मतलब When the product of the company goes to the final customer, you have a business. सो जो प्रोडक्ट होगा कंपनी का, वो जब कस्टमर के पास जाएगा, आपके पास अच्छा बिजनेस है. If we are just recruiting people, there is no money you're going to earn. आप खाली लोगों को जोड़ते रहेंगे ना यहाँ पे, तो कोई आप पैसा नहीं कमाएंगे. But if step by step you are taking care of getting your first customer, your third customer, your 10th customer, your 20th customer, पर धीरे धीरे आप जब पहला कस्टमर बनाते हो, 5वां कस्टमर बनाते हो, 10वां कस्टमर बनाते हो, 20वां, and then at the same time you're introducing new associates to your team, और उसी के साथ साथ आप नए एसोसिएट्स आपकी टीम में रिक्रूट कर रहे हो, now you know how to teach them to do what you are doing because you are doing it. तब आपको पता चल जाता है कि आपको जो काम आता है वही उनको सिखाना है, क्योंकि आप खुद वो कर रहे हो. Just like McDonald's franchisee. सेम होगा ये मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी की तरह. McDonald's franchisee became what it is because the first joint of McDonald's was very successful. मैकडॉनल्ड्स का इतना बड़ा ग्रोथ क्यों हुआ है? क्योंकि जो जॉइंट था मैकडॉनल्ड्स का, वो बहुत सक्सेसफुल था. Because if your original source, the first associate, if you yourself are not clear, you're not doing well, even if you try to recruit people, they cannot duplicate success. तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, आप बहुत रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो, बट आप खुद बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो रिटेल में, तो ऑफ कोर्स आप डुप्लीकेशन उस तरीके से अच्छा नहीं कर पाओगे. So how do we create that our original, the original, us, you, me, we are the original of our future group? हम एक ओरिजिनल कॉपी है हमारे फ्यूचर ग्रुप के लिए. We need to make sure that our original self is successful. हमको एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम ओरिजिनल है, तो हमको पहले सक्सेसफुल बनना पड़ेगा. How do we do it? Number one, we make sure we are using the products to get results, to give ourselves confidence. तो हम कैसे कर सकते हैं? हमको सबसे पहली चीज करना पड़ेगा कि हमको खुद को प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, हमको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा कि मुझे रिजल्ट आ रहा है. यस. Second, we have a plan, a daily plan of action to actually do the business, to get our first customers, to get our first associate, daily plan of action. और एक दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट हमको करनी चाहिए कि हमारे पास डेली प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है कि हमको हमारा नया कस्टमर कैसे मिलेगा उस चीज के लिए. Daily plan of action 100% will give you results when it is daily. आपका डेली प्लान ऑफ एक्शन जो है 100% आपको रिजल्ट देगा जब वो डेली रहेगा. And when you are doing well, having 3, 4, 5, 6 customers, you're making cash. Now it's going to be very easy to teach your new associates to do the same. आप जब 5, 6, 7 कस्टमर बनाते हो, जब आप अच्छा कैश प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आपको बहुत इजी लगेगा आपको वो सिखाने के लिए दूसरे को. And when you can teach people to do what you do, they are going to teach their people to do what they do.
जब आप अपने लोगों को जो सिखाओगे, जो आप खुद कर रहे हो, तो वो भी उनके लोगों को सिखाएंगे जो वो कर रहे हैं, And that's where your network grows. और फिर तब आपका जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. Even if you are not in action, you are going to reach a point in your career where even if you stop working, your business will continue growing. धीरे धीरे आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे ये बिजनेस में कि आप भले ही काम नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आपका इनकम जो है बढ़ते ही रह रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. How can you know when you can raise your hands and the business will happen even without you? आपको कब समझेगा ऐसा कि जब आप ऐसे आराम से रिलैक्स कर रहे हो और फिर भी आपका बिजनेस हो रहा है? When you have TAP team members, people who are in the TAP team, Global Expansion Team, Millionaire Team, when you have people like that in your group, now if you want, you can take a break. So जब आपकी टीम में टैप टीम मेंबर्स रहेंगे, जैसे कि गेट टीम मेंबर है या मिलियनेयर टीम मेंबर्स है या प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स है, आपकी टीम में जब ऐसे लोग रहेंगे, तब आप मेक श्योर कर सकते हो कि मुझे आप काम नहीं करूंगा फिर भी चल जाएगा. But of course, most of us don't want to take a break when we have a TAP team because we are so excited how the business is growing. We want to get more people like that. So we work even harder and even faster. बट हम अभी यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचे हैं, फिर हमारी टीम में बहुत सारे टैप टीम मेंबर्स है, बट फिर भी हम रुकते नहीं यहाँ पे क्योंकि ये काम बहुत एक्साइटिंग है और मजा आता है करने में, तो इसलिए हम और नए लोगों को रिक्रूट करते हैं. You need to understand that there is a difference between people who earn great incomes in life and people who struggle, and it is not personality. आपको एक चीज जो है ना उसको उस पर ध्यान देना जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो है ये दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं और कुछ लोग जो है कि एवरेज इनकम करते हैं, तो ये कोई पर्सनालिटी पे डिपेंड नहीं करता है. Because personality we can improve. My personality when I joined the business was not suited to this type of business. क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. मेरा जो पर्सनालिटी पहले था बिफोर हर्बल लाइफ वो बहुत ही अलग था और आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अलग है. But it matters where you are. Where are you working? What are you connected to? So मैटर कौन सी चीज करती है, जो आप काम कहाँ पे कर रहे हो, कैसे So we काम know कर रहे हो. in the world there are basically 4 ways to produce income. ये दुनिया में खाली 4 ऐसे रास्ते हैं जहां से पैसा बनाया जा सकता है. I know many of you have seen this before, but you need to get this into your brain because the minute you realize where you are in these 4, it doesn't matter your last month income. You will be excited about what is possible for you. आप ये 4 क्वाड्रेंट का फोटो पहले देखा होगा, बट आपको अभी फिर से रियलाइज करना है और आपके दिमाग में ये चीज फिट करना है कि आप यहाँ क्वाड्रेंट पे कहाँ पे बिलोंग करते हो, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें. If there is anyone there that is possible for you to get me a nice hot tea, I will really appreciate it. I don't know who is it going to be, but I'll really appreciate it. Thank you. You don't have to translate that. Okay, so we have 4 ways to produce income. It's basically split into 2 groups. जैसे 4 रास्ते हैं पैसे बनाने के, इसमें 2 ग्रुप अलग अलग बनाए गए हैं. The first is E and S. पहला कैटेगरी जो है E और S कैटेगरी, And the second category is B and I. दूसरा कैटेगरी जो है B and I का है. Right? E and S get paid according to the time invested. E और S कैटेगरी की जो लोग हैं वो टाइम के अनुसार पैसे बनाते हैं. Right? If you are an employee, right, you work for 8, 9, 10 hours, you produce some kind of value in that company, and according to that, you get paid at the end of the month. आप अगर एम्प्लॉय हो तो आप 8-10 घंटे कंपनी के लिए काम करते हो और वो 8-10 घंटों के लिए आपको अमाउंट जो है सैलरी जो है मिलती है कंपनी की तरफ से. In most companies, if you work a bit harder one month, you work a bit slower another month, salary will still be the same. सभी कंपनीज में ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा बेहतर भी परफॉर्म करते हो आपकी कंपनी में, बट फिर भी आपका सैलरी जो है वो सेम रहेगा. थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हो फिर भी सेम रहेगा. You know, so what is the disadvantage as an employee to earn an income? When your income is related to time and to your personal work, you are limited. So एम्प्लॉय का एक डिसएडवांटेज क्या है, उनका जो इनकम है ना वो उनके टाइम पे डिपेंड करता है. वो कितना भी घंटे काम करो उनका इनकम सेम ही रहेगा. Because only 24 hours in a day. और वैसे भी 24 घंटा होता है खाली पूरे एक दिन. Doesn't matter how hard working you are, you can't work 25 hours. तब भी आप मेहनत करो, आप 25 घंटा एक दिन में काम नहीं कर सकते. We all have limitations. So if you are earning according to a limited figure, your incomes are always going to be limited. So आप अगर लिमिटेड फिगर के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो आपका जो इनकम है, तो ऑफ कोर्स आपका जो इनकम रहेगा वो भी लिमिटेड ही रहेगा. Then we have the S category, people who are self-employed. फिर उसके बाद एक आता है S कैटेगरी, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं.
They can be carpenters, plumbers, electricians. They can be different professions, doctors. डॉक्टर हो सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, कारपेंटर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, अलग अलग उनके प्रोफेशंस Right. हो सकते हैं. Basically, they own their own job. What does that mean? Is they also get paid only according to the time and effort that they give personally. सो ये जो कैटेगरी है, इनका जो इनकम है वो उनके वक्त पे और उनके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना वक्त वो खुद काम कर रहे हैं. They will always have to work for money. Always. उनको हर टाइम पैसों के लिए काम करना ही पड़ेगा. If your income as a self-employed comes only when you work, you will always have to work for money. सो आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर काम कर रहे हो और आप अगर काम कर रहे हो तो ही अगर आपको पैसा आ रहा है, तो आपको लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा. पैसा लाइफ लॉन्ग चाहिए. Even if your salary is very good, you still have to work for it for the rest of your life until you retire. भले ही आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है आपके काम में एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, बट फिर भी आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर अगर इनकम चाहिए तो. The E and S represents 95% of the population of the world. पूरी दुनिया में से 95% लोग जो है ये कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं. Then the second category is the B and I, business and investors. दूसरी जो कैटेगरी है ये बी और आई कैटेगरी आती है. Business owners, they earn not only on what they do. बिजनेस ओनर जो है बस जो खुद काम कर रहे, खुद मेहनत कर रहे, उसी पर खाली पैसा नहीं बना रहे. They either employ people who are better than them to give them a salary and give value to the company that they make themselves rich. एक तो चीज ऐसी है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो उनके लोगों को सैलरी देते हैं, उनकी कंपनी में जो भी लोग हैं उनको सैलरी देते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं. So the business owner starts a business, he employs people, he invests money, but after some time, if the business is doing well, he has a lot of people working for him or her, maybe many of them more talented than the owner, maybe better performers, smarter, more educated, but they will earn like the E. They will not earn B, they will earn E. Only the owner will earn all the big money. तो ये बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि ये भले ही अच्छा उनको खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, बट वो ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं उनके टीम में, उनके कंपनी में, कि जो लोग उनसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, वो उनके लिए उनके नौकरी करते हैं. और ये सारे के बी क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो जो एम्प्लॉय है वो सब लोग जो है एम्प्लॉय की तरह ही इनकम अर्न करेंगे, बट पैसा जो है खाली वो जो ओनर रहेगा कंपनी का उसी को मिलेगा. And write this down. If you're writing, take this note down. When you are in business, you own a system. आप जब एक बिजनेस में हो तो ये चीज लिख के ले लो कि एक For example, in our business, we have our monthly system. सो हर एक बिजनेस का एक सिस्टम होता है. हमारे बिजनेस की अगर मैं बात करूं, हमारा भी एक सिस्टम. I don't own this system. It's our system. तो ये मेरा सिस्टम नहीं है, ये हमारा सिस्टम है. I am not the boss and you are my employees. You are just like me. I am just more time than you in the business. मैं यहाँ पे बॉस नहीं हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो. मैं और आप सेम है, बट मैं खाली मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है यहाँ पे. That's it. This system belongs to you, to me, same. ये सिस्टम आपका और मेरा आपका जितना है उतना ही मेरा भी है. The more you take advantage of the system that you own, the more money you will make in this business. आप जितना फायदा ये सिस्टम का उठाओगे, जो आपका खुद का है, उतना ज्यादा आप पैसा बनाओगे. The good news for all of you to understand, in this business, we are from category B and also category I. तो आपको अगर मैं एक थोड़ा सिंप्लिसिटी में अगर मैं बता दूं, तो हम ये बी कैटेगरी में भी आते हैं जब हम हर्बल में काम कर रहे हैं, और आई कैटेगरी में भी आते हैं. Why? We don't need to invest money to be investors. तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है इन्वेस्टर बनने के लिए. We invest our time in our customers. We invest our time in our associates. हम हमारा जो टाइम है वो इन्वेस्ट करते हैं कस्टमर्स में, हम हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं एसोसिएट्स में. When you as a sponsor start investing time in your customers' results by doing follow-up, even though sometimes it's annoying, you are investing time in a customer's results. One day you are going to see big returns from some of them. जब आप आपका खुद का वक्त इन्वेस्ट करते हो आपके क्लाइंट्स में, कस्टमर्स में, उनका बेटर रिजल्ट लेने के लिए, फॉलो अप में, जो कि बहुत कभी-कभी बोर हो जाता है, बट फिर भी वो एक दिन वो कस्टमर जो है आपको बहुत लंबे और बड़े रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में देगा. When you invest time in your associate's business, in your supervisor's business, you might not see results immediately, but you are investing for the future, time and effort.
आप जब इन्वेस्ट करते हो आपका टाइम और जो एफर्ट है आपके एसोसिएट्स के बिजनेस में उनके ग्रोथ के ऊपर अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी के लिए आपको कुछ ज्यादा इनकम्स जो है या रिटर्न्स उसके दिखेंगे नहीं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको दिखेंगे. So in network marketing, we belong to the B&I category, which is amazing. What an opportunity for the average person like, you guys and me to be part of this category without investments, without risks, without jeopardizing anything in our lives. तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और मौका है हमारे लिए कि हम बी कैटेगरी में आते हैं जहां पे हमको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने का जरूरत नहीं है, ना किसी को सैलरी देने का जरूरत है, ना बहुत बड़ा रिस्क लेने का जरूरत है, बट फिर भी हम बिलोंग करते हैं बी कैटेगरी में. बहुत बड़ी बात है. You need to understand also, like I told you, when I joined Herbalife 26 years ago, I never heard about network marketing. मैंने जैसे पहले बोला कि मैं जब ज्वाइन किया था हर्बलाइफ में मैंने कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था. I didn't know that a world, a business, an industry like that exists. मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में. How many of you know about the movie industry, Hollywood, Bollywood? आप में से मूवी इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में किस किस को पता Music industry, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में सबको the पता है. football league. I know football is less in India, but all around the world, football is a big deal. सो फुटबॉल जो है पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल लीग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. बिजनेस. Look at the network marketing industry compared to all the industries you know. सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अगर आप टर्नओवर देखते हो तो बाकी सारी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखिए कितना है. You belong to that industry. और आप वो इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो. Do you understand how powerful this is? The reason why not a lot of people that are not involved, they don't know about network marketing is because network marketing is not advertised like traditional businesses or like the music industry. It's a very direct one-to-one business. सो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे अगल बगल वाले सारे लोग क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होता है बिल्कुल. ये 1-to-1 डायरेक्ट सेल्स होता है. The other day we were watching TV and suddenly we saw they were showing some I don't know what it was, a movie or something, and it said sponsored by Herbalife Nutrition on TV yesterday, I think it was. तो मैं कुछ yesterday कल ही टीवी पे मैं कुछ देख रहा था और फिर वहां पे बहुत बड़ा नाम आया sponsored by Herbalife Nutrition. But we were sponsoring an event that has to do with fitness, with athletes, with to do with our industry. तो हम स्पॉन्सर क्या कर रहे थे? फिटनेस रिलेटेड जो चीज है वो हम स्पॉन्सर कर रहे थे हमारे इंडस्ट्री के लिए. So when someone in your family or friends tells you, network marketing, no, these things don't work. You have to understand network marketing is one of the biggest industries on the planet. Just because your family doesn't know about it or your friends don't know about it, doesn't mean it doesn't exist. तो बहुत सारे लोग जो है फैमिली मेंबर्स बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं है, बट उनको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कितना बड़ा है. उनको पता नहीं है. उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं है. आपने अभी And look how it's distributed around the world. Look at Asia. तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी दुनिया में कैसा हुआ है देख लीजिए एक बार. The biggest percentage of network marketing industry comes in Asia, and India in Herbalife is number 2 in the world, but in India Herbalife is number 1. राइट. तो ये यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा शेयर है यहाँ पे, और उसी के साथ साथ हर्बलाइफ के वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जो है हर्बलाइफ इंडिया जो है पूरी दुनिया में 95 कंट्रीज में सेकंड रैंक पे आता है. और मैं खाली नेटवर्किंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर मैं सारी कंपनीज की अलग अलग बात करूं तो इंडिया में नंबर 1 है हर्बलाइफ. Do you remember I told you about that group in the beginning? 4 of them selected themselves to become successful. तो जो मैंने पहले स्लाइड्स में बताई थी कि जो 4 लोग हैं उन्होंने खुद को डिसाइड किया था, निर्णय लिया था उन 4 लोगों ने कि मुझे we didn't have these facts at that time. We didn't have all this. तो मुझे हमारे तब के जमाने में हमको ये ऐसी फैक्ट्स नहीं थी, पता भी नहीं थी. But just because they saw and felt the product results and they understood how the marketing plan can benefit, तो उन्होंने बस वो खुद का रिजल्ट जो है उस पर भरोसा रखा और मार्केटिंग प्लान जो है उससे कैसे फायदा होगा वो चीज देखी. they understood that if they do the work, if they work the numbers, success is guaranteed in Herbalife if you are willing to do the work. तो उनको पता था कि अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है तो सक्सेस यहाँ पे Herbalife में गारंटीड है. Now you have all these facts. You have things none of us had when we started the business 20 years ago, 23 years ago in India. तो आप सभी के लिए ये फैक्ट्स अवेलेबल है, मौजूद है, जो हमारे पास नहीं थी 23 साल पहले. You can select yourself today. Today, you can select yourself. आप निर्णय ले सकते हो कि मुझे ऐसे बनना है आज के आज.
you can say, and this is what they said, this is what I said, you can say, from today, I don't think any more negative about myself in this business. No more negativity about me in this business. आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं आज निर्णय ले रहा हूं कि मैं खुद के बारे में नेगेटिव ये बिजनेस के साथ बिल्कुल नहीं सोचूंगा. If I don't get results, it's because I'm not doing enough. मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा. But I select myself from today, no matter what, I'm going to be one of those who takes advantage of the business for the future. मैं अभी निर्णय ले रहा हूं कि नहीं, मुझे ये कुछ लोगों में से बनना है जो ये हर्बलाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, no matter what. And when you select yourself, your attitude changes, your mindset changes. जब आप ये निर्णय लेते हो ना, तो उसके बाद आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है. Because if you understand how the marketing plan works, if you understand network marketing, you understand what is happening in India. आपको पता है कि इंडिया में क्या बिजनेस हो रहा है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ये प्रोडक्ट्स कैसे रिजल्ट्स देते हैं. If you understand that, you know you can become very successful in this company. Even if it takes 3 years, even if it takes 5 years, even if it takes 10 years, you are part of an industry that if you do the work, you will succeed 100%. It doesn't matter what happened in the last 6 months. तो आपको अगर ये तीन चीजों भी पता है ना, और इस पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो हो गया, आपका सक्सेस जो है गारंटीड है. अगर आप इनफ लोगों से बात करते हो, नो मैटर व्हाट, पिछले 6 मंथ्स में आपके साथ के बिजनेस में क्या हुआ है. I love this slide. मुझे ये स्लाइड बहुत ज्यादा पसंद है. बहुत अच्छा. Why? Because from the $178 billion turnover in this industry, the average commissions all these companies give around the world is 40% from the company's turnover. अगर मैं सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो $178 बिलियन का जो भी बिजनेस हो रहा है, उसमें से 40% जो है शेयर. Write this down. Herbalife gives up to 73%. तो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं, तो 40% जो है शेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट दिया जाता है. बट 40% is the average. There are people who give 50, 55. There are people who give 30, 25 maximum. Herbalife is the only company that gives up to 73% back to associates. तो बहुत सारे जो अलग-अलग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, कुछ लोग 25% देते हैं, कुछ लोग 50% देते हैं, बट हर्बलाइफ एक इकलौती कंपनी ऐसी है जो 73% जो है ना शेयर एसोसिएट्स में बांट देती है रिटर्न. When you understand all what I'm explaining, when you put it together, I promise you, if you put it together after this training is over, you go and you think about it. You look at your notes and you start thinking, how can I fail in this business? You think, how can I fail? तो ये ट्रेनिंग होने के बाद आप एक बार बैठिए और आप सोचिए कि मैं बिजनेस में फेल कैसे हो सकता हूँ. You should take a notebook. You should take a notebook and you should write, how can I fail in Herbalife? तो आप एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, how can I fail in Herbalife? After today's training, at the end, sit down, have have some khana, and then write, how can I fail in Herbalife? Number 1, I don't use the products. तो आप एक बार आपका खाना वाना होने के बाद आप नोटबुक लेके बैठो और लिखना कि हाउ कैन आई फेल इन हर्बलाइफ. और पहला पॉइंट लिखना कि मैं अगर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करूंगा तो मैं I don't use. So I don't want to fail. So from today, I'm going to use the product seriously. Okay, that's gone. Tick. मुझे मुझे सक्सेसफुल बनना है कंपनी में, तो आपको लिखना पड़ेगा मुझे प्रोडक्ट्स यूज करना है कंपनी में. ठीक हो गया. Second, how can I fail? I don't attend trainings regularly. Second point. तो सेकंड पॉइंट है ये, आप हर्बलाइफ में फेल कैसे हो सकते हो. आप अगर ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करते हो तो आप फेल हो सकते हो. तो आप दूसरा, I want to become successful, so I'm going to write, I'm going to do my best to attend every training possible. At least do your best. I'm not saying 100%. Do your best. So that's going to be eliminated. So the second point to fail, gone. तो दूसरी चीज जो आप लिखोगे कि मुझे हर्बलाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करना पड़ेगा. तो आप सोचो कि नहीं मुझे तो सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे हर एक ट्रेनिंग में बैठना है. ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी टिक हो जाएगा. Third point, how I can fail in Herbalife. तीसरी चीज जो है आप हर्बलाइफ में फेल कैसे हो सकते हैं. I don't talk to at least 3 people every day about the products. At least 3 every day about the products. 3 लोगों से अगर आप डेली बात नहीं करेंगे हर्बलाइफ में तो आप 100% फेल हो जाएंगे. And I don't talk to at least 3 people about the business. Minimum 3 people. Conversation with your family, friends, outside with the button. At least 3 people. और 3 लोगों के साथ बिजनेस के बारे में अगर आप बात नहीं करोगे तो आप हर्बलाइफ में फेल हो जाएंगे. Minimum. If you don't do this, okay, that's a way to fail.
तो ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक रास्ता है फेल होने का। Because I know some of you talk to 10 people in a day, but then the next day, zero. बट मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग जो है एक दिन में 10 लोगों से बात करते हो, नेक्स्ट Oh, डे I 0 was लोगों से बात। distracted. Oh, this is happening. Oh, that is happening. I couldn't talk. Listen, if you were doing job, your boss would listen to your excuses. तो आप कुछ लोग जो है ना बाद में बोलते हो कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अरे मैं भूल गया। तो अगर आपके जो बॉस है, अगर आप नौकरी करते हो हर्बल लाइफ में, तो आपके जो बॉस है क्या वो आपके एक्सक्यूजेस सुनेंगे? Your boss would say, "Oh, I feel so bad for you. So I'm so sad for you. No problem. This job is not for you. Goodbye. I'll find someone else. Go." तो आपके Finish. बॉस क्या बोलेंगे? ओ नो, आप काम नहीं कर सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, आप निकलो यहाँ से, मैं कोई और को रिक्रूट कर लेता हूँ। And you know it, so you will never dare come to your boss and say, I can't come tomorrow, day after tomorrow, the pipe has broken, electricity not good at home, oh, my family is coming, oh, this has happened at home. Boss will say, listen, I don't care. तो आपके बॉस को अगर आप ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे कि मेरा पानी का नल खराब हो गया है, मैं नहा I'm नहीं not a पाता हूँ। social worker. You have problems, you deal with it. It's your life, not my life. You have to come tomorrow for job. No job, no salary, no class. तो अगर आप नौकरी पे नहीं जाते हो और ऐसे एक्सक्यूजेस देते हो तो बॉस बोलेगा निकल लो यहाँ से, मैं किसी और को रिक्रूट करता हूँ, और आपको अगला देंगे वहां से। In this business, you can give any excuses. No one can fire you. ये हर्बल लाइफ में आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हो क्योंकि आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, But you will not succeed. बट आप सक्सेसफुल भी नहीं बन पाएंगे। But if you select yourself and you make sure these 3 points you do every day, you selected yourself to succeed. आप अगर सिलेक्ट करते हो खुद को, निर्णय लेते हो कि ये 3 चीज जो है मैं हमेशा डेली करता रहूंगा, तो आप 100% सक्सेसफुल की डायरेक्शन में And जाओगे। every one of you can go, when you are at home, you can relax, you can take the notebook and you can write your own reasons to fail. Why would I fail in Herbalife? Herbalife is #1, best products. India is #2, on the way to be #1. The #1 in India in network marketing, everything is the best. India is amazing. People are qualifying, blah, blah, blah. Why would I fail? तो आप जब अभी घर पे ये ट्रेनिंग होने के बाद सोचो कि मैं हर्बल लाइफ में फेल क्यों होऊंगा, इसका रीजन ढूंढो, राइट? आपको पता है कि हर्बल लाइफ 95 कंट्रीज में है, इंडिया का जो बिजनेस है पूरे 95 कंट्रीज में नंबर 2 पे है, इंडिया में सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में इंडिया नंबर 1 पे है। ऐसी सारी चीजें अगर आप रियलाइज करोगे तो ऑफकोर्स आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कोई रीजन नहीं मिलेगा हर्बल लाइफ नहीं करने का। People who are rickshaw drivers became president team in India. रिक्शा ड्राइवर जो इंडिया के प्रेसिडेंट टीम मेंबर बन गए हैं। Office boy, 3 diamonds, 20K. ऑफिस बॉय जो है वो 3 डायमंड 20K बन गए Not हैं। 1, 2, so many. एक दो नहीं, बहुत सारे। Housewives who never did a job in their lives get mill press. हाउसवाइफ सादी सिंपल हाउसवाइफ जो है वो गेट टीम है, मिल टीम है, प्रेसिडेंट टीम्स है। So you have to write, why not me? आपको लिखना है मैं क्यों नहीं फिर। You have to write, maybe I don't read enough books. I don't read every day. I'm not working on my attitude. I'm always negative. This is not working. This is not for me. I can't do this. Maybe that's the reason you're going to fail. तो शायद आपका एक रीजन हो सकता है फेल होने का कि आप ज्यादा अच्छे से बुक्स नहीं पढ़ते हो, या फिर आप बहुत बार निगेटिव सोचते रहते हो। So now you decide. So now you write, I am going to I select myself from tomorrow, 30 minutes a day I read. No khana, no washing, no sky, no relatives. 30 minutes I read every day. So this point to fail, gone. तो आपको लगता है कि मैं ये चीज की वजह से फेल हो सकता हूँ हर्बल लाइफ में, तो तुरंत लिख दो, नहीं मैं 30 मिनट रोज अच्छी किताबें जो है पर्सनल डेवलपमेंट की पढ़ूंगा, और वो भी आपका टिक मार्क हो जाएगा। See how simple it is to select yourself to succeed in this company. See how simple. तो देखिए कि कितना सिंपल है ये कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए, आपको खाली निर्णय लेना है। Just write the reasons you think you are going to fail in Herbalife. Be honest with yourself, only for you. Write down, why am I going to fail? Write it down. No one needs to know. I'm not really using the products correctly. तो आपको ये जो चीजें है ना खाली आपके खुद के लिए लिखनी है आपकी डायरी में, क्या आप क्यों हर्बल लाइफ में फेल हो सकते हो। I'm eating too many calories a day. आपको लिखना है सीधे सीधे कि मैं ज्यादा कैलोरी I'm not doing enough activities. मैं इनफ एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूँ, I'm not consistent in my work. मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ मेरे काम। I'm not working on my attitude. I'm complaining. I'm this and that. I'm comparing myself to other people. मैं मेरे एटीट्यूड पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बार-बार कंप्लेन करता हूँ, मैं इससे उससे कंपेयर करता हूँ खुद को। Now you say, okay, this is why I'm going to fail. तो ये सारी लिस्ट है आपकी फेल होने की।
Now you want to succeed. Now you go one by one and eliminate it. I'm starting today to use the products correctly. तो एक बाय एक के बाद एक आप पूरा पढ़िए और उसके बाद धीरे धीरे एक एक को एलिमिनेट करिए. Tomorrow, 30 minutes in the morning, I read. Tomorrow, 2.5 hours, I do activities. No matter what, I'm on the road talking to people. तो आप डिसाइड करिए 30 मिनट कल से मैं रोज पढ़ूंगा, 2.5 घंटा मैं रोज एक्टिविटीज बाहर जाके लोगों से बात करूंगा. Like Snehal said in my supervisor school, not sitting at home on your bum. तो जैसे स्नेहल मैडम ने अभी सुपरवाइजर स्कूल में बताया था, खाली आपके बम पे नीचे बैठ के घर पे कुछ नहीं होने. Stop sitting at home on your bum thinking you will become successful. It's not going to work. आप खाली एक सीट पे अगर आपके घर पे बैठे रहेंगे तो वो काम नहीं होने वाला है आपका. How did people become president team members without social media? Tell me. आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट टीम जो है विदाउट No सोशल मीडिया, internet, no social media, no mobile phone, became president team and chairman club. विदाउट मोबाइल फोन, विदाउट एसएमएस, विदाउट सोशल मीडिया लोग चेयरमैन्स क्लब तक पहुंच गए. You are taking negative advantage of the advantages you have. Negative, sitting on your bum the whole day. आप नेगेटिवली उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, दिन भर एक आप बैठे रहोगे आपके Thinking बम. if you send 100 messages or this, that is what's going to. No. We need to chase our dreams. We need to go out and find those serious people. We can't wait at home praying, hoping serious people will message us. It doesn't work like that. तो बस एक जगह पे बैठे रह के आप मैसेजेस करते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला. आपको बाहर लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा. I think this is one of the biggest steps you can use to change for the better your entire business. Right today, the reasons you feel you're going to fail and eliminate them one by one. Take decision. Select yourself. तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ निर्णय जो है सीरियसली आज से लेने हैं कि आपको लिस्ट बनाना है पहले कि आप यहाँ पे फेल क्यों हो सकते हो, और धीरे धीरे बाकी जो चीजें हैं जो भी वहां पे लिखी है सारी एलिमिनेट करते रहो. So let's write this down. Why network marketing? Why? तो ये लिखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों. Number one, we can sponsor our weaknesses. I love this. तो नंबर 1 चीज है, हम हमारे वीकनेसेस जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं. You know, I'll tell you a secret I have not told many people. Only some of the president team members know. मैं I'll आपको tell you a small secret. आज मैं आपको सबको एक सीक्रेट बताऊंगा जो सिर्फ कुछ प्रेसिडेंट टीम लोगों को पता है. You know, after my first supervisor school, मेरी जो फर्स्ट सुपरवाइजर स्कूल थी उसके बाद I am not being arrogant. I promise you. You have to trust me. मैं बहुत ऐसा एरोगेंट नहीं बनने का कोशिश कर रहा हूँ. आपको मुझ पे भरोसा रखना. At the end of my first supervisor school, I knew I'm going to become president. I knew. मेरी फर्स्ट सुपरवाइजर स्कूल के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं I never had a doubt. I never, I don't think I can do it. I don't think this is possible. I knew I was going to become. I'll find a way, but I knew I'm going to become president. मुझे मेरे फर्स्ट सुपरवाइजर स्कूल के बाद पता था कॉन्फिडेंटली कि मैं प्रेसिडेंट टीम एक ना एक दिन बनने वाला हूँ. मैं रास्ता Not because I thought I'm great. I knew I'm not great. मैं ग्रेट हूँ इसलिए मुझे नहीं लगा था ऐसा. मैं I बिल्कुल knew not educated, aggressive person. You know, I come from a background of survival. I was rude. I was not the personality you need in a business to do with people. मेरी ऐसी पर्सनालिटी थी ना जो हर्बल लाइफ में बिल्कुल काम नहीं करने वाली थी. तो मैं ऐसा पर्सनालिटी था मेरा. मैं बहुत एग्रेसिव था. मैं ऐसी बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे सर्वाइवल चल रहा था खाली. मेरा कुछ But I knew I will become president. I knew it. बट फिर भी मुझे पता था कि मैं प्रेसिडेंट टीम बनूंगा यहाँ. 2 reasons. 2 उसके कारण है बहुत बड़े. First reason, I decided I will never quit this business no matter what happens. पहला डिसीजन मैंने लिया था कि मैं ये बिजनेस को कभी नहीं छोड़ूंगा नो मैटर व्हाट. क्या होगा. As long as I can breathe, I'm going to do herbal. मैं जब तक सांस ले रहा हूँ मैं हर्बल लाइफ में रहूंगा. I will do it. It goes down, it crashes, it doesn't work, people leave me. I don't care. I will continue and continue and continue until class. मैं ये बिजनेस को मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं को कुछ भी हो जाए, बिजनेस ऊपर जाए नीचे जाए लोग छोड़ के जाए, मैं ये बिजनेस आखिरी सांस तक करने वाला. Because I knew what is the alternative. If not Herbalife, if not network marketing, I will have to do job. तो मुझे पता था कि हर्बल लाइफ नहीं तो मुझे दूसरा जो चीज है वो जॉब था और वो बहुत ही डेंजर था. I will have to live my life to achieve other people's dreams for the rest of my life till I'm gone. मुझे नौकरी में चीज पता थी कि मुझे काम मैं भले ही कितना भी मेहनत कर लूं काम कर लूं बट मैं लोगों के सपने पूरे करूंगा वहां पे. I will work hard so other people's children will have a good life.
मैं बहुत मेहनत करूंगा वहां मेरे नौकरी पे, ताकि मेरे जो बॉस है उसके बच्चे जो है अच्छी जिंदगी जी पाए। So I decided, first decision, I'm never going to quit. तो मैंने डिसीजन तभी ले लिया था कि मैं हर्बलाइफ कभी नहीं छोड़ूंगा। If the sky falls, I will still do Herbalife. अगर ऊपर से आसमान भी नीचे गिर गया ना, तो भी मैं हर्बलाइफ करता रहूंगा। Right? Second reason, दूसरा रीजन बताता हूँ, this, we can sponsor our weaknesses. हमारी जो वीकनेसेस जो है वो हम स्पॉन्सर यहाँ पे कर सकते हैं। I knew I'm going to become president because I knew my weaknesses. मुझे पता था कि मेरे वीकनेसेस क्या है। What is your weaknesses? Think, what is your weakness? आप सोचिए आपके क्या वीकनेसेस है ये बिजनेस में। Maybe some of you are lack of confidence, a bit lack of confidence. कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। Maybe some of you are in financial struggle at the moment. अभी के लिए कुछ लोग जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो सकते हो। Maybe some of you are very young, so people are not taking you seriously. शायद आप बहुत यंग रहेंगे और आपको लोग सीरियसली भी नहीं ले Maybe रहे। you're in a mature age and you don't have that much of energy to do too much of work throughout every single day. शायद आपका बहुत ज्यादा एज हो सकता है और बहुत आप एक्टिव नहीं रह सकते हो आपके It एज के साथ। doesn't matter वो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। because you can sponsor other people who don't have that weakness. तो आप ऐसे लोगों को इनवाइट करके बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिनके पास वो वीकनेसेस नहीं है। I don't speak Hindi. I don't speak Marathi. I've got 3 lakh people in the organization in India who speak so many Indian languages I've never heard of. मेरे को इंडिया की कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, ना हिंदी आती है, ना मराठी आती है, ना और कोई आती है। बट मेरी टीम, अब हमारी टीम में 3 लाख लोग ऐसे हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। I knew it's going to happen मुझे पता था ये होने वाला है, because it was happening to other people. Why will it not happen to me if I'm inviting people to the same meetings? तो ये लोगों के साथ हो रहा था, तो मुझे लगा मेरे साथ क्यों नहीं होगा। सेम मीटिंग में अगर लोग बुला If रहे हैं, I'm taking people to the same trainings, सेम ट्रेनिंग पे अगर लोगों को लेके आ रहे हैं, तो मैं भी and ले if I आऊंगा। do it again and again and again, I'm also going to have some good people. तो मैं अगर बार बार यही चीज करता रहूंगा, तो मुझे भी पता था कि मेरे को भी ये लोग ऐसे मिलेंगे जैसे बाकी लोगों को मिल रहे हैं। So network marketing, from my point, is a magical industry that allows whoever, no matter who they are, to have a beautiful life if they are willing to put the work and be consistent. मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि जहाँ पे आप खाली मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो, तो आपको आपकी जिंदगी जो है आप पूरी डिजाइन कर सकते हो आपके हिसाब से। The second amazing thing is when we are part of network marketing, we belong to a world-class enterprise. We belong to an global international company. तो एक और बेनिफिट हमको ऐसा है कि हम एक ग्लोबल इंटरप्राइज के साथ बिलोंग करते हैं ये बिजनेस करते वक्त। But you don't have the headache of the corporate world. बट आपको ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे The दिमाग लगाना पड़ता है, politics, स्ट्रेस, the backstabbing, ऐसा पीछे खींचते हैं पैर the लोगों को। backstabbing, going to the boss and saying, he did this, he did, because I want to get promotion. He did this, he did that. He said this about you. No politics, because you can't complain to anyone. No one wants to hear you. तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं होती है। अरे उसने वो किया, अरे उसने वो किया, ये यहाँ पे चलता नहीं है बिल्कुल। And why network marketing? Because we can multiply ourselves. और ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक और चीज जो है, हम खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ। For me, it was very easy to decide that I'm going to be part of Herbalife, part of network marketing for the rest of my life. It was very easy. I never had a doubt, even when my business was flat, even when I was struggling, even when I had no money to buy food in my first 1, 2, 3 years in India. मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था 1% का भी कि मैं हर्बलाइफ को कुछ ना करूं। मुझे करना ही था और मुझे पता था कि यहाँ पे मैं 100% सक्सेसफुल होने वाला हूँ। Because I always compared it to my other options. What are my other options? If I don't do Herbalife, what are my other options? तो मैंने कंपेयर कर रहा था मैं तब कि मेरे जो बाकी ऑप्शन है वो क्या थे। If not Herbalife, then what? So I had no chance to become a businessman because I had no money to invest. I didn't have the background, or to become a co-operator, or to be a CEO of a company, right? But even if I would have maybe great incomes, great salaries, but I would never have freedom. मैं भले ही एक सीईओ या बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है वो नहीं बन सकता था, बट अगर मैं बन भी जाता, बट मेरे पास फ्रीडम नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। If I don't do the business and I go and look for a job and I don't get a job, so I'm unemployed. Now I have a lot of time, but no paisa. बट मैं अगर बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, चलो ठीक है नौकरी कर लेता हूँ। नौकरी अगर करूंगा तो मैं बहुत पैसे तो कमा लूंगा, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। If I'm an employee, so I don't have money and I don't have time.
और एम्प्लॉय अगर रहूंगा तो पैसे भी नहीं रहेगा और इनकम भी नहीं, टाइम भी नहीं रहेगा. And in network marketing, I understood I have both the advantages. If I work hard enough for enough time, I'm going to have all the time in the world to do whatever I want, and I will have more than enough money than I need. बट मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं रहूंगा तो मेरे पास टाइम भी रहेगा जितना चाहिए उतना, और मैं को पैसा भी चाहिए उतना मैं कमा सकता हूँ यहाँ. Remember, people that trade time for money are the ones who struggle in life. तो आप एक चीज जो है ना याद कर लो कि जो लोग जो है ना टाइम के बदले पैसा ले रहे हैं ना, तो वो हमेशा स्ट्रगल ही करते रहे. And look at the last sentence. 90% of people who have time and have money are networking. Any type of networking. It doesn't have to be network marketing. They are networking in their business. 90% जो लोग रिच है तो वो कुछ ना कुछ नेटवर्क का काम कर रहे हैं. नॉट जस्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग, बट कोई भी नेटवर्क उनका बिजनेस के में जो है ना नेटवर्क फॉर्म हो गया है. And you need to understand this. Very important. You should write this down. There are two universal limitations. तो आपको ये चीज जो है ना लिखना है. यूनिवर्सल लिमिटेशन है दो अलग अलग. One is limited amount of time. पहली चीज जो है लिमिटेड टाइम. Only 24 hours in a day. बस 24 घंटा एक दिन. Right? Doesn't matter how hardworking you are, you don't get extra time. आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको एक दिन में 24 घंटे से ऊपर टाइम नहीं मिलेगा. So it doesn't matter how hard you're willing to work, even you are going to have a limited amount of time you can work. आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके पास लिमिटेड टाइम ही रहेगा काम करने के लिए आपका. And limited efforts. There is so much you can do. Doesn't matter how hard you're willing to work, there is a limit. और लिमिटेड एफर्ट्स ये एक दूसरा चीज है. पता आप कितना भी मेहनत कर लो, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ लिमिट रहेगा. The good news in network marketing, we can leverage time, skills, and effort. नेटवर्क मार्केटिंग का जो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम टाइम, एफर्ट और स्किल्स, ये तीनों चीज जो है लेवरेज कर सकते हैं. Right? There are people in my team, in our team, that are very good on social media. हमारे टीम में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं. I'm learning. I mean, I'm learning from Khushbu, but I'm really bad in social media. मैं अभी सीख रहा हूँ सोशल मीडिया. मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ उसमें. I mean, I have great gadget. I have a very nice laptop. Today I went and I bought a new one. मेरे पास बहुत अच्छा लैपटॉप है. मैं आज ही जाके एक नया लेके आया हूँ. See, I bought a brand. I don't know if you can see it. Can't see it, no? You can see it. Look. Wow. Brand new MacBook Air. Beautiful. बहुत बढ़िया सा एक मैकबुक मैं आज ही लेके आया हूँ, नया वाला. I didn't know how to start it. मुझे पता नहीं इसको शुरू कैसे करना. I didn't know where to click. Khushbu, show me what to do now. What to do? Nagging her. I don't know what to do. Now I have two beautiful laptops. One costs 1.5 lakh. The other one costs almost also 1.5 lakh. I don't know what to do with it. ये 2.5 लाख का ये लैपटॉप है मेरे सामने, और एक नया 2.5 लाख का लैपटॉप जो है 1.5 लाख का मैंने ले लिया. But there are people in the group, in our group, who are so good in social media. They are making a lot of money with basic laptops and basic phones, but they are earning amazing incomes. बट हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो सिंपल लैपटॉप है उनके पास, बेसिक लैपटॉप है, और बहुत अच्छा सोशल मीडिया का बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहे हैं. So by introducing people to the business, I could leverage the skills I don't have through people who have the skill. तो ये लेवरेजिंग का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिजनेस में जो मेरे से ज्यादा सोशल मीडिया अच्छा जानते हैं और वो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं. And if we are talking about time, imagine if you have 20 people in your team that are working only 2 hours a day. तो अगर आप टाइम की बात करो, आप जस्ट इमेजिन करो आपकी टीम में 20 लोग हैं जो 2-2 घंटा खाली काम कर रहे हैं. That's 40 hours of work you get paid on every day. तो 40 घंटों के ऊपर आपको इनकम आएगा हर दिन. We don't get paid on the time, but if they are working every single day, they're going to create results. We get paid on that. They're working for 40 hours. तो ये 20 लोग अगर 2-2 घंटा भी काम करते हैं तो उनके उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हमें को भी कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी या चेक आएगा. That's why introducing people to the business is so important. Working on it on a daily basis. तो इसीलिए नए लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग-अलग you can do it by increasing your customer base and then introducing people from your customer base to the opportunity or directly inviting people to the BOP. आप दो टाइप से चीज कर सकते हो. डायरेक्टली लोगों को बीओपी में इनवाइट कर सकते हो, या फिर आपके जो कस्टमर्स है जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो. But when you introduce people to the business, you are leveraging. Leverage. You see what he is doing? He is leveraging to move the rock.
तो आप जब भी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में, तो आप लेवरेजिंग कर रहे हो। वो जो अभी देख सकते हो आप, लकड़ी से पत्थर को उठा रहा है, उसको If he लेवरेजिंग। would, if he would try to move the rock by himself with his own two hands, he wouldn't be able to. It's too heavy. तो अगर वो खुद के हाथों से अगर वो पत्थर उठाने का ट्राई करेगा ना, तो वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है। But because he's put this with the leverage, all the pressure of the weight of the rock is going here, not in his hands, it's here. तो अगर आप देखेंगे ठीक से, तो वो लकड़ी जो वहां पे उन्होंने डाली है, उसके ऊपर पूरा लोड आ गया है, ना ही कि उनके हाथों पे आ रहा है। So when you recruit new first line, तो जब आप न्यू फर्स्ट लाइंस रिक्रूट करते हो, it's actually creating this leverage here, first line, because these guys, some of them are going to create your business that will move anything you want. तो वो आपके लिए वो एक बड़ा स्टिक रह सकता है, जो आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस आगे क्रिएट करे। And again, recruiting, we don't have to recruit everyone in our future organization. Our focus is our first line. आपको पूरी दुनिया को रिक्रूट नहीं करना है, आपका फोकस जो है, आपका खाली फर्स्ट लाइन रिक्रूट करना है। And helping them do the same, supporting them, guiding them to do the same. और उनको वही चीज सिखाना है, आगे सपोर्ट करना है, गाइड करना है, वही चीज करने के लिए। Because like a lily, like a fool in a lake, the duplication will happen. Maybe not from the first day, not from the first month, but if you are having a daily active business, you are daily talking to people, inviting people, having confirmations, right? Before every single meeting, slowly your group is going to grow. जैसे एक फूल तालाब में खिलता है और बाद में धीरे धीरे डुप्लीकेट होता है, वैसे ही आप अगर रोज एक्टिविटीज करेंगे, रोज नए लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे ऐसा ही डुप्लीकेट होकर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कराएगा। If you seriously start from tomorrow morning to focus more on your daily activities, to invite people to the presentation, to start thinking, okay, I have to take advantage of network marketing, it'll take 2 months, 3 months, 6 months, and you already will have a nice team. आप जैसे ही कल सुबह से अगर डिसाइड करते हो कि मुझे रिक्रूटमेंट करना है, और धीरे धीरे अगर आप रिक्रूटमेंट चालू करते हो डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे आपका बहुत बड़ा टीम बन जाएगा। When you have a nice team, many of them will start doing what you are doing. तो जब आपका एक अच्छा टीम बनेगा, तो बहुत सारे लोग वो टीम में ऐसा काम करेंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। And then your team can double, and it can triple, and it can go even bigger and bigger, even though you are just introducing 3 to 5 new associates a month. तो आपका जो टीम है वो धीरे धीरे डबल होगा, फिर ट्रिपल होगा, फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, और धीरे धीरे आप 3 से 4 भी लोगों को रिक्रूट कर रहे हो धीरे धीरे हफ्ते में, तो भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका लॉन्ग टर्म में बनेगा। Let me ask you a question. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। If I offer you 1 penny, मैं आपको 1 रुपए अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ, penny, 100 penny is $1. तो 100 पेनीज मतलब $1 होता है। $1 is around 80 rupees. $1 जो है अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज होता है। $1. 1 penny 100 times is $1. 1 पेनी 100 टाइम्स अगर हम देखेंगे तो $1 होता है। Yeah. So if I offer you 1 penny or $3 million, $3 million is around 2.4 CR. तो 1 पेनी में अगर ऑफर करूं, या फिर $3 million अगर मैं आपको ऑफर करूं, $3 million $3 24 CR. 24 करोड़ होता है। If I give you $3 million or 1 penny, which will you choose? तो मैं अगर आपको 1 पेनी देता हूं और यहाँ पे $3 million मतलब 24 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो आप क्या चूज करोगे दोनों में से? $3 million, of course. 24 करोड़ आप चूज करेंगे, ऑफ कोर्स। But I tell you, listen, before you take the $3 million, I'll give you this penny after 31 days that it duplicates itself every day. तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये 1 पेनी जो है ना रोज डुप्लीकेट होता है, 31st डे को मैं आपको ये 1 पेनी जो है वो दूंगा। Remember, $3 million is 25 crores, 24 crores. $3 million मतलब 24 करोड़ रुपए होता है। 1 penny is 100 pennies is $1, 80 rupees. 100 times 1 penny. 1 पेनी मतलब 80 रुपीज होता है, 80 रुपए। But let's say you duplicate this for 31 days. In the second day, you will have 2 pennies. आप अगर देखेंगे तो दूसरे दिन में आपके पास 2 पेनी रहेंगे। Third day, you will have 4 pennies. तीसरे दिन में 4 पेनीज रहेंगे। 8 pennies. फिर बाद में 8 पेनी रहेंगे। 16, 36, 72,
फिर 32, फिर 64, ऐसा पेनीज जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा हर एक Even if दिन। you have 500 pennies, that's $5. तो अगर आपके पास 5 पेनी भी हो गए तो $5 हो गए। $5 is 480 rupees, 460 rupees. तो $5 मतलब 460 रुपए हो गया खाली। But do you know what happens to that one penny after 31 days? तो 31 डेज के बाद वो एक सिंगल पेनी का क्या It होगा आपको becomes पता है? $10 million. तो उसका 31st डे पे उसका जो नंबर है वो $10 मिलियन का हो जाए। Most people don't know this. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। This is what successful people know. तो ये सक्सेसफुल लोगों को पता है। That is why successful people say patience. तो इसलिए सक्सेसफुल पीपल बोलते Because हैं employee mind says now. क्योंकि एम्प्लॉय माइंडसेट बोलता है अभी चाहिए। I worked 1, 2, 3 days, give me paisa. आज मैं काम करूंगा मुझे 2 पैसा। I worked 1 month, salary. आप थोड़ा सा और मेहनत 1 महीने करेंगे तो बोलेंगे सैलरी। You don't give me salary for 3 months, strike. मैं अगर आप अगर 3 महीना हमको सैलरी नहीं देंगे तो हम रास्ते पे बैठ जाएंगे। Strike. Throw cans, Molotov bottles. Why? Because no salary 3 months. कंपनी को फोड़ो तोड़ फोड़ करो फिर वो नारा लगाओ यूनियन बनाओ ये ऐसी चीज हो जाती है फिर सैलरी नहीं दी। Successful people understand compound effect. Compound. सक्सेसफुल लोगों को कंपाउंड इफेक्ट जो है ना उसके बारे में नॉलेज है। Network marketing compounds our business. नेटवर्क मार्केटिंग जो है कंपाउंड करता है बिजनेस को। You start with 1 associate, then 2 associates, then 5 associates, then 10 associates, then 1 supervisor, then 20 associates, then 2 supervisors, then 50 associates, then 5 supervisors and 1 world team. तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो 1 एसोसिएट 2 एसोसिएट 10 एसोसिएट के बाद एक सुपरवाइजर बनेगा फिर 15 एसोसिएट 20 एसोसिएट्स फिर एक दूसरा सुपरवाइजर आए फिर धीरे धीरे 25 एसोसिएट 30 एसोसिएट आपकी टीम में आते तो एक वर्ल्ड टीम बन जाएगा। But this doesn't happen just because you want. It happens when you do daily activity consistently, no break. बट ये कब होगा जब आप कंसिस्टेंटली डेली एक्टिविटी करो तब होगा ब्रेक के बिना। Right? And then your business starts growing. But you need patience because network marketing is proven that it works. बट आपके पास पेशेंस होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रूव कर लिया ऑलरेडी। Right? Then you want to write this down or take a picture. In order to earn volume rebate, which is royalty. आपको एक पिक्चर लेना है तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखिएगा कि रॉयल्टी जो है वो लेने के You लिए need to build a team of supervisors under you. आपके पास आपकी टीम ऑफ सुपरवाइजर्स होने चाहिए आपके नीचे। What you need to understand, write this down. Not all distributors are going to become supervisors. आपको एक चीज नोट करना है कि सारे के सारे आपके एसोसिएट सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। Because when you start building a network marketing business, sometimes we expect everyone that joins to be serious and to do business. तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो भी रिक्रूट आप कर रहे हो जिसको भी आप एसोसिएट बना रहे हो आपको लगता है कि वो सारे के सारे एसोसिएट सीरियस होने चाहिए। No. It works like this in all companies in this industry for the last 100 years. तो ये ऐसी चीज ऐसे नहीं होती है पिछले 100 सालों से ये इंडस्ट्री में ऐसी चीज जो है कभी नहीं हुई। Most associates are not going to become supervisors. बहुत सारे लोग जो है सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। Some of them will just do this part-time, some of them will become customers, and some of them will leave. कुछ लोग जो है पार्ट टाइम करेंगे कुछ लोग खाली प्रोडक्ट यूज करेंगे खुद का बाकी कुछ लोग जो है छोड़ देंगे। Right? But if we want to have supervisors, which is the goal in this business, we have to consistently continue introducing people to the business through customers and through new guests in the BOPs. तो अगर आपको सुपरवाइजर्स चाहिए तो ऑफ कोर्स कुछ आपको रिक्रूटमेंट जो है एसोसिएट्स की बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ I'll give you a big example. कुछ कस्टमर्स थ्रू या कुछ एसोसिएट्स थ्रू। मैं एक आपको Right, look at बहुत this. बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। President team organization. प्रेसिडेंट टीम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। Write this down. You don't need to have a lot of people to become a president team. आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए। You can become a president team with 3 to 5 serious people. आप प्रेसिडेंट टीम लेवल जो है 3 से 5 लोगों के साथ सीरियस एसोसिएट्स के साथ भी बन सकते हो। But to have 3 to 5 serious people, you need to be introducing a lot of people through your customers and through whatever activities you're doing to the BOP. बट 3 से 5 लोगों के साथ आपको बिजनेस अगर बड़ा करना है तो आपको बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा पहले तो 3 से 5 सीरियस लोग आपको उनमें से मिलेंगे। If you have this kind of an organization, just because you found 5 serious people in your business, your monthly income is 20 lakh only on your 3 levels.
तो अगर इस तरीके से अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ये 3 से 5 लोगों की वजह से, तो आपका महीने का इनकम 20 लाख हो सकता है। This 6% can continue to the deeper organization. तो ये फर्स्ट 3 लेवल्स की मैं खाली बात कर रहा हूँ, और वो 6% जो लिखा है वो तो पूरा आपके इन्फिनिट लाइन तक, लास्ट की लाइन तक वो आपको मिलेगा। What does it matter? How long does this take? If you know 100% it can happen, what does it matter? कितना भी वक्त लगे, आपको अगर पता है ये होने वाला है तो होने वाला है। Do you have any other option आपके पास ऐसा ऑप्शन है कोई दूसरा to make this kind of income next 5 years? आपके अगले 5 साल में ऐसा इनकम जो है, कुछ ऑप्शन है आपके पास जो No, मिलेगा? right? So why not get really serious where you have that option? तो अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो क्यों ना उसके पर बहुत टूट के पड़े और सीरियस हो जाए। But it starts with your first line. बट वो शुरुआत उसका आपके फर्स्ट लाइन से ही होगा, Because everything you're going to have in this business in the future is going to start from what you do. तो कुछ भी ये बिजनेस में आप जो भी करोगे ना, तो आप क्या करते हो उस पर से ही सारी चीजें शुरू हो जाएगी। You don't have to worry about the 25 people in your second level and the 125 people in your third level. Our focus as a sponsor is our first line. तो आपको ये बाकी 25 लोगों की टेक केयर करने का जरूरत नहीं है अभी के लिए, आपको वो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बाकी नीचे 125 लोग कैसे आएंगे। आप पहले आपका फर्स्ट लाइन जो है वो क्रिएट करो। To get your 3 to 5 first line supervisors who are serious, you will need to introduce a lot of people to the business. तो आपको वो 3 से 5 सीरियस लोगों को ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे एसोसिएट्स को फर्स्ट लाइन में रिक्रूट करना पड़ेगा। You can't introduce 3, 4, 5 associates, and because nothing much has happened, you call your sponsor, but my associates are not working, it's not happening. तो आप खाली 3 से 5 लोगों को रिक्रूट करके आपके स्पॉन्सर को नहीं बोल सकते कुछ नहीं हो रहा है मेरा, कुछ एसोसिएट काम ही नहीं कर रहे हैं मेरे। You can't complain. You can't be some because you are not continuing to work. These 3 or 5 are waiting for you somewhere in your activities. तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ये 3 से 5 लोग जो है ना यहाँ पे जो सर्कल किए, तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में है आपके लिए। You don't have to become successful to get successful people in your business. No. आपको सक्सेसफुल बनने का जरूरत नहीं है, ऐसे सक्सेसफुल जो लीडर्स है Just because you are not earning a lot of money with Herbalife and you're not that confident, and it doesn't mean you can't recruit people who are very powerful in the business. You can. ऐसा मतलब नहीं। Can we mute? Yeah, it's muted. Okay. Muted. So you can, even if you're not that confident right now, if you do your activities, you can attract people that are very potential for this business. आपको सक्सेसफुल होने के बाद सक्सेसफुल लोगों को ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप अभी ऐसे जो भी लेवल पे आप हो, अभी भी आप ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हो जो बाद में आपकी टीम में जाके बहुत बड़े लीडर्स बन सकते हैं। My sponsor was a supervisor when she recruited me. मेरी है वो सुपरवाइजर थी जब उन्होंने मुझे रिक्रूट किया था। She had no associates, no supervisors. उनकी टीम में कोई एसोसिएट नहीं था, ना ही कोई उनकी टीम में कोई सुपरवाइजर था। Only customers. बस कस्टमर बेस था उनका। But I joined her business because I saw the opportunity. It didn't matter to me how much money she was making. तो मुझे कुछ मैटर नहीं कर रहा था वो कितना पैसा कमा रहे हैं हर महीने। I focused on the opportunity. I saw what can happen to me because I understood, wow, network marketing. It means I can be not educated, not confident, no paisa. And a few years from now, I can have a beautiful life if I'm willing to work hard. मैंने अपॉर्चुनिटी की तरफ खाली नजर जो है वो रखी, ना कि मेरे स्पॉन्सर कितने सक्सेसफुल है उस पे। मुझे पता था कि अपॉर्चुनिटी में अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कहीं पहुंच सकता हूँ कुछ सालों में। So every one of us here, number one, if you're an associate, you need to focus. Okay, how can I work towards my supervisor level? Because you want to reach to the supervisor level as soon as possible. Work for it. तो आप जितने भी एसोसिएट्स हैं आज ये कॉल पे, आपको पहला गोल आपका ये है कि मैं खुद सुपरवाइजर जल्द से जल्द कैसे बनूं। आपको उसके लिए पहले काम करना है। And then you need to be ready to do the basic things to build your business. तो आपको फिर बाद में रेडी होना पड़ेगा बेसिक चीजें जो है वो करने के लिए बिजनेस में। So the first thing is always be ready to present the opportunity to people. Don't only think when you're sitting at home working on Instagram or talking to your family, that's when you can do Herbalife. ऐसा नहीं कि आप बस घर पे बैठे हो और सोच रहे हो और तभी आप हर्बलाइफ करते हो। You can do Herbalife. You can offer the opportunity to anyone, anywhere. आप हर्बलाइफ का अपॉर्चुनिटी जो है किसी को भी कभी भी कहीं भी दे सकते हो।
You go to the grocery shop, you see some customers in the grocery shop, you smile. आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो किराना लाने के लिए और थोड़ा सा You हंस के smile, आप you say, उनके साथ excuse me, स्माइल कर sorry सकते to हो। disturb you. Maybe you know anyone that wants to make some extra income, they can give us a call. We are now recruiting people in this city who want to work from home part-time, full-time. आप उनको बोल सकते हो कि एक्सक्यूज मी, आप हंस के स्माइल करके बोल सकते हो कि हम यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। Right? And you can take the script from your sponsor. What to say? So, what do I need to do? What is this business? Is this selling? You learn that in the university. You can get the tips from your sponsors. स्क्रिप्ट जो है आपके स्पॉन्सर से ले सकते हो कि एक्चुअली ये बिजनेस में आप इनविटेशन जो है कैसे कर सकते हो उसका। But you need to be willing to present the opportunity anytime, anywhere. There is not like a specific timing or place where you talk about the business. तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए कि आप कहीं पर भी किसी के साथ भी बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि घर पे ही आप घर से ही आपको फोन पे बात करना है। Right. Second thing is, I said before, you don't need a huge organization to reach to the high levels in Herbalife. मैंने पहले ही बोला है कि आपको एक बहुत बड़ा टीम होने के टीम आपके पास होना जरूरी नहीं है बहुत ऊपर जाने के लिए बिजनेस। You just need a few serious people in your group that are committed to their own personal goals and don't get distracted with kachara stuff. आपको कुछ सीरियस लोग जो है आपकी टीम में चाहिए जो डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे और आपका जो उनका जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से करेंगे। Right? Therefore, committed. How do you find them? We spoke about it. You need to talk to more people, invite more people. You know, we have a supervisor. He's a new supervisor, Umesh. Right? He just joined 2.5 months ago. This guy, you know, I mean, he's doing activities every day, having a big number of confirmations by himself. हमारा आपको पता है कि एक उमेश जो है नाम का एसोसिएट जो है 2 ही महीने पहले हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुआ था और तुरंत वो सुपरवाइजर बन गया और बहुत सारे कस्टमर्स और एसोसिएट्स उसके तुरंत अभी बनने लगे। I think for yesterday he had around 42 or 45 confirmation. He got 2 new first line associates on the spot. 40 उसके कंफर्मेशंस थे कल के बीओपी के लिए और 2 उसके एसोसिएट्स तुरंत बन गए। Most of you are more qualified than him, more experienced than him. You are, you understand the marketing plan more than him. But what makes the difference? Work. Hello. आप में से कुछ लोग इससे ज्यादा क्वालिफाइड है, इससे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव ज्यादा है, बट क्या फर्क है दोनों में? सिर्फ काम का। Right? So you need to be consistent with what you do. Whatever plan you decide with your coach, be consistent. That's the goal. Remember the book, Why Am I Going to Fail in Herbalife? One of the points is I am not consistent. I'm not doing my work every day. तो आपको जो भी काम यहाँ हर्बलाइफ में करना है आपको कंसिस्टेंटली करना है। जो रीजंस आपने वो डायरी पे लिखे हैं तब थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था उसमें एक चीज थी कि मुझे कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। And I promise you, even as a new associate here who is a VIP or a success builder or a supervisor, you can plan your president team achievement in the next 3 to 5 years. तो आप भले भी आज VIP हो या क्वालिफाइड प्रोड्यूसर 42% पे हो, आप आपका प्रेसिडेंट टीम प्लान कर सकते हो अगले 3 से 5 सालों के बीच में। Number one, because of what is happening in India. पहली चीज जो इंडिया में हो रहा है उसकी वजह से। Number two is because what? It's a fact already in India. The number of years it takes now to move up in the levels for people who are willing to work is shorter. तो नंबर 2 जो चीज है आपको पता है कि इंडिया में सारी चीजें हो रही है ऑलरेडी कि जो प्रेसिडेंट टीम लेवल को रीच करने के लिए जो पहले समय लगता था अभी बहुत छोटा हो गया है। You need to understand the entire world is looking at Herbalife India right now. आपको पता होना जरूरी है कि पूरा दुनिया का जो हर्बलाइफ है वो इंडिया के हर्बलाइफ को देख रहा है। I'll tell you something I'm not supposed to tell you. मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो मुझे एक्चुअली कहना नहीं चाहिए। I trust you that you will not speak to people from another organization that I told you this. I trust you. मैं आप पे भरोसा करता हूं कि आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को ये बात नहीं What बताओ। is the highest level of training in Herbalife International? Do you know? हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग हर्बलाइफ इंटरनेशनल का क्या है आपको पता है? It's called the honors. उसे कहते हैं ऑनर्स। Honors, where we get our annual bonuses. Only millionaire team members and above can attend this event. तो ये इवेंट में बस मिलियनेयर टीम्स और अबाव जो लोग हैं वही अटेंड कर सकते हैं। I'll give you a small secret. मैं आपको एक स्मॉल सीक्रेट बताता हूँ। Imagine you can be in the 2024 honors. 2024 honors.
इमेजिन करिएगा कि आप 2024 के ऑनर्स में आप जा सकते हो, You have 2 years to qualify. आपके पास 2 साल है क्वालिफाई You करने can के लिए। become a millionaire in 2 years. Of course, every one of you. I don't care who you are. If you change your attitude, your mindset, you make the list of why would I fail, and you eliminate that. 2 years, you can become millionaire team. Even president millionaire team. अब 2 साल में ही मिलियनेयर टीम लेवल जो है हासिल कर सकते हो, इवन प्रेसिडेंट टीम लेवल हासिल कर सकते You हो know अगर आप why? सारी चीजें को It's eliminate because करते हो। Honors आपको पता है 2024 is happening in India. ऑनर्स 2024 जो है वो इंडिया में होने वाला है। Do you understand how the company is looking at India now? The honors that has been for years in US, 40 years. 40 साल से ऑनर्स का जो ये इवेंट है बस यूएस में होता रहा है 40 सालों से। Company wants to do the honors of 2024 in India. Can you imagine, first time in the history of the company, and you can be part of history, you can be qualified for the honors. पहली बार एक्चुअली मुझे भी ये बात करने में कैसा हो रहा है कि पहली बार है पूरे 40 साल में ऐसा हो रहा है कि इंडिया में ऑनर्स जो है वो इवेंट जो है होने वाला है और आप इसका पार्ट बन सकते हो 2024 के। How do you do it? You need to take advantage of the network marketing system. आप ये कैसे कर सकते हो हासिल? आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का। And there is only one secret in Herbalife, only one. और एक ही सीक्रेट है हर्बलाइफ में, It's called numbers. उसे कहते हैं नंबर्स। It's not talent, it's not ability, it's not age, it's not education, numbers. इसे बस नंबर्स ही आपको सॉल्यूशन है, ना कि आपका टैलेंट क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका If एज you क्या है, follow आपका the background क्या है। right numbers when you do activities, when you talk, if you follow the right numbers, taking advice from your successful sponsors, and you follow this day in, day out, even as a part-time, results are guaranteed. आप अगर नंबर्स अगर फॉलो करते हो और आपके जो अपलाइंस है उनको अगर आप सपोर्ट लेते हो और ये सारी चीजें जो सीख लेते हो, ऑटोमेटिकली ये नंबर्स अगर आपका अच्छा रहेगा ना तो रिजल्ट 100% गारंटीड है। How do athletes become champions? एथलीट जो है जो ओलंपिक्स में आते हैं वो चैंपियन कैसे बनते How हैं? they become champions? They practice. वो प्रैक्टिस करते हैं। You think they practice twice a week, क्या लगता है आपको वो 2 हफ्ते में 2 बार ही प्रैक्टिस 3 करते हैं? times a week? 3 बार करते हैं? They practice every day, twice a day, morning and evening. तो वो हफ्ते में प्रैक्टिस करते, रोज प्रैक्टिस करते हैं 2 To टाइम, become a सुबह और रात। champion. Because when you Champion. practice, you improve your skills. जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप आपका खुद का स्किल इंप्रूव करते हो। You can't expect to get positive results when you are just getting started in the business. तो आप तुरंत पॉजिटिव चीजें जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप धीरे-धीरे अभी स्टार्ट ही कर रहे हो आपके बिजनेस को। Because you are just getting started, you need to improve your skills with practice. आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस में तो आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के साथ। So when you are talking to people about the products and people say, I'm not interested, no problem. You are improving your skill even if that person didn't become a customer. अब फॉर एग्जांपल किसी के साथ बात कर रहे हो और वो अगर आपको सामने से ना बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वो वहां पे प्रैक्टिस ही हो रहा है उसके साथ बात करके। In my first 3 months, no one bought the products from me. 3 months, 0 customers. मेरे पहले 3 महीने में बिजनेस के किसी ने कोई भी कस्टमर नहीं बना मेरा, 0। I didn't have the skill to communicate with people about the product result. I didn't know how. I was very aggressive. I was not patient. I didn't let them talk. I did all the talking. मैं बात ही नहीं करने देता था कस्टमर्स को और मैं बहुत अग्रेसिव था तब शुरुआत में, इसलिए मैंने कुछ कस्टमर्स बनाए नहीं पहले 3 मंथ में, पॉसिबल But नहीं। I learned because I did it again and again and again and again and again. Wow, result. तो फिर मुझे पता था कि नहीं आज नहीं तो कल मेरे को मिलेगा, प्रैक्टिस 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 Na अगेन na एंड na अगेन। na 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 ha. तो बहुत सारे ना सुन रहा था, उसके बाद एक यस मिलता था। This ha was so important because this ha gave me confidence. तो ये हाँ मुझे बहुत जरूरी था क्योंकि ये हाँ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। Now with confidence, I talk better to people. So I get less na 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 until I get the next ha. तो फिर ये हाँ की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर बाद में मेरे को फिर ना आ रहा था लेकिन कम आ रहा था, थोड़े से ना Second ha gave me even more confidence.
फिर एक हाँ आया, तो वो सेकंड हाँ ने मेरे को और थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील So कराया। I started talking to more people because I saw it happens if I talk to enough people. The first customer, the most difficult customer. तो मुझे पता था कि जो मेरा फर्स्ट कस्टमर है वो बहुत डिफिकल्ट कस्टमर था बनाना। The first supervisor, the most difficult supervisor. मेरा फर्स्ट सुपरवाइजर जो मेरा बना था बहुत मेहनत Today, करना there पड़ा are था फर्स्ट सुपरवाइजर। 23,000 supervisors in our organization. आज हमारी टीम में 23,000 सुपरवाइजर्स। When I got my first supervisor, I said, it works. मुझे जब मेरा फर्स्ट सुपरवाइजर मिला था तब मुझे पता चला, अरे नहीं ये Right? तो हो रहा Then I है। got it. The more I talk, the more I'm excited, the more confident, I'll get better results. So I started doing it, practicing, improving my skill. तो मुझे एक चीज पता चल गई थी कि मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ये चीज पॉसिबल है, ये तो होने ही वाला है, बट उसे प्रैक्टिस करना है। I'm not going to go through these points because you all know this. You just need to understand the first thing. Be connected to the system. मैं सारी चीजों पे अभी बात नहीं करूंगा, आपको सब पता है ये, बट मैं एक ही लाइन बताऊंगा आपको कि आपको सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है। A strong person in a weak team is weak, but a weak person in a strong team will become strong. That's how it works. एक वीक पर्सन अगर स्ट्रॉन्ग टीम के साथ रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो वीक सिस्टम के साथ रहेगा तो वो वीक बन जाएगा। And our system is amazing because it shows everything we need to show to a new associate, new customer, starting with our health talk tomorrow, right? All this, exactly the points we need in our business are already there for all of us to take advantage. तो हमारे सिस्टम जो है सारी चीजें जो है कस्टमर्स के लिए और एसोसिएट्स के लिए ओपन है और सारा शोकेस हम करते हैं, आपको बस उसका फायदा उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी कल You हेल्थ don't टॉक्स have to create this. You don't have to create this system. आपको खुद को सिस्टम नहीं बनाना है एक नया वाला। You own this. This is yours. As an associate in Herbalife, this system is yours. ये सिस्टम आप ही का है, आपको इसका खाली इस्तेमाल करना है। You just need to take advantage of it if you understand what it means to your future. People who don't take advantage are people who don't understand the magic of network marketing and the Herbalife opportunity. That is why they don't take advantage. तो जो लोग एडवांटेज नहीं लेते हैं ना, तो उनको ये बेसिक्स जो मैंने आज बताई है वो उसका पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है उसका, इसलिए वो एडवांटेज नहीं लेते हैं। Look at the benefits of having an organization in Herbalife. Look at this, from building a team in network marketing. Look what can happen to you. तो एक ये बेनिफिट्स है, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बन जाता है उसका क्या क्या बेनिफिट्स है देखिएगा एक बार। It's happening to thousands of people in India. Thousands, not dozens, not hundreds. Thousands of people are changing their life, financial life, health, freedom. Thousands in India. डजन भर और ऐसा 100, 150, 200 लोगों का खाली लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग जो है यहाँ पे जो ऐसा सक्सेस जो है हासिल कर रहे हैं पूरे इंडिया में। Why not you? आप क्यों Why नहीं? not you? आप क्यों नहीं? Take the list and write. Why not me? डायरी लीजिए और लिखिए, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, Maybe आपको क्या I am not चाहिए? using the products consistently, correctly. Maybe I wake up in the morning, instead of shake, I have poha. Maybe sometimes instead of having 2 shakes, I have 3 meals. Maybe I'm not really consistent with using the products and not being an example to my customers, to my associates. So okay, I'm going to change it because I select myself to be a success in this business. मैं क्यों नहीं? अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि मैं करेक्टली प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा खाना जो है ओवर कैलोरीज खा रहा हूँ, मैं ये जो चीजें है जो मुझे सिखाई गई है कोच के द्वारा वो सीख नहीं रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो आप बोलिए कि नहीं मुझे तो ये सारी चीजें बदलनी है, तो मैं No, but you सिलेक्ट were करता हूँ saying, no, खुद को but कि I I want to use the change this. products correctly. I get up every morning, first thing is shake, a fresh shake tablets. First thing, every morning, pakka. मुझे पता है कि मैं हर रोज सुबह उठ के शेक फ्रेश और मेरा टैबलेट्स लेता हूँ, पक्का। I have one regular meal, lunch or dinner, good meal, not too much carbs, not too much sugar, not too much salt. And then third meal, I have a nice shake. I'm doing this every day, 7 days a week, last 6 months. तो मैं हर रोज ये चीज कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा मील लेता हूँ लंच में या फिर डिनर में, और बाकी 2 टाइम मेरा शेक होता है, बहुत अमेजिंग शेक। Then you can tick, this is not the reason why I'm going to fail. तो आप टिक कर सकते हो, ये कारण जो है ये नहीं रह सकता है मेरा फेल होने का।
I don't attend every training. Sometimes I attend, sometimes I don't, sometimes I get busy, sometimes instead of the training, I'm watching TV, I leave my cam off. Maybe that's the reason I fail. शायद मेरा रीजन हो सकता है फेल होने का, मैं ट्रेनिंग ही नहीं अटेंड करता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, कभी टीवी होता है, कभी गेस्ट आते हैं. So you write it down. I say, okay, I'm going to eliminate this. I'm going to change because I want to become successful. I want to select myself because rickshaw drivers, housewives, office boys, retired people are becoming president team. I have everything that is possible you need in this business. I'm struggling. Maybe it's this point I have to change. तो आपको लिखना पड़ेगा कि शायद ये पॉइंट है कि मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फेल हो सकता हूँ, बट मुझे तो सक्सेसफुल बनना है. तो आप लिख लो, नहीं मुझे ट्रेनिंग्स में हम हर एक ट्रेनिंग जो है मैं अटेंड कर लूंगा. यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर, ऑफिस बॉयज, सारे हाउसवाइफ्स. But I use the products correctly. I attend every training. बट आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, मैं सारी ट्रेनिंग में बैठ रहा हूँ. What can be the reason I'm failing? I don't do activities every day. तो क्या रीजन हो सकता है मैं यहाँ पे फेल क्यों होऊंगा? हाँ, मुझे अभी समझ आया कि मैं एक्टिविटीज रोज नहीं कर रहा हूँ. Also, when I don't do the right numbers. I do less because I get tired. Book lagi, so I go home early. I get distracted. Maybe this is the reason because I'm not consistent. और अगर मैं एक्टिविटीज भी कर रहा हूँ तो आपको अभी रियलाइज होता होगा कि नहीं मैं तो कंसिस्टेंटली नंबर्स ज्यादा मेरे नहीं हो रहे, कम नंबर्स हो रहे हैं. So now I select myself. I want to be a success in this business. This might be the reason I'm messing up my future. I need to change. So from tomorrow, I'm going to write down what activities I'm doing, what time, how many, and I'm going to call my sponsor and send pictures to show them I'm doing it every day. No jhoot, no bakwas. तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं शायद ये रीजन हो सकता है मेरे सक्सेसफुल नहीं रहने का. तो इसलिए मैं आज से ये चीज लिख लेता हूँ कि नहीं मुझे अभी एक्टिविटीज करनी है, कितने बजे एक्टिविटीज करनी है, कितना टाइम करनी है, कितने नंबर्स आप करोगे, ये सारा चीज जो है आपके स्पॉन्सर्स को नंबर्स ओरिजिनल भेजो, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है. If we could go on stage in Spectacular, अगर हम स्टेज पे जा सकते हैं स्पेक्टेकुलर में, and you would ask, how many of you have BOPs and business seminars like this in India? तो अगर आप पूछोगे स्टेज पे से कि आप में से कितने लोगों के पास बीओपी ऐसा होता है हर हफ्ते, you will be shocked how very few groups have this kind of people part of their system. तो आप शॉक में चले जाएंगे कि उनके सिस्टम में बहुत कम लोगों के सिस्टम में ऐसा होता है कि ऐसा बिजनेस प्रेजेंटेशन हर हफ्ते होता है. So could it be the fifth reason why you are not succeeding is because you don't understand the value of the system? Could that be the reason? तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि आपको सिस्टम का वैल्यू ही नहीं है आपके. Do you understand what is possible if you get people for tomorrow's BOP, having Mala who is making 8-9 lakh a month? तो क्या आपको आइडिया है कि आप ऐसे जो गेस्ट स्पीकर है हमारे माला मैडम, वो अगर 8-9 लाख महीने का कमा रहे हो, how many people, right people, their mind will say, wow, what an opportunity. So right लोग जो है आपके जितना भी जो भी गेस्ट को बुलाएंगे उनमें से जो right लोग हैं, but if you have 2 confirmation, 5 confirmation, I have 13 confirmation, you will have 1 head and 1 leg in the meeting. You need numbers because 10% of confirmations will attend. आपके पास 5 कंफर्मेशन है, 10 कंफर्मेशन है, 15 कस्टमर कंफर्मेशन है, तो आपके हाथ एक थोड़ा सा हाथ आएगा, प्रेजेंटेशन में एक पैर आ जाएगा. Tomorrow presentation is at 2 p.m. You can wake up tomorrow at 6 a.m. in the morning, and after the club, you can do enough activities, enough calls, enough confirmation to have 5 new guests in this meeting. तो आप कल हमारा जो मॉर्निंग का क्लब है वो जैसे ही खत्म हो जाता है, आप 2 बजे तक मेहनत करके बहुत सारे लोगों के साथ बात करके लोगों को इनवाइट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में, और एटलीस्ट 5 लोग जो है आपके प्रेजेंटेशन में बैठने चाहिए. Look at the type of system we have. अपने सिस्टम के पास एक बात दे सकते हो आप. You show this to anyone, they will say, can we use it also, including president team members. तो आप ये अगर किसी को बताओगे ना तो वो बोलेंगे कि हमको भी चाहिए. Because they will bring 20-30 people to every meeting. They will go crazy because they know what a chance. The window of opportunity might close in 1 or 2 months. So ये उनको पता है कि इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा कितना उठाना जरूरी है, तो वो बोलेंगे 25-30 लोगों को बुलाएंगे वो प्रेजेंटेशन. How many of you are going to be qualified for tomorrow's power hour?
आप में से कितने लोग जो है पावर आवर ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करने You वाले हैं? have to select yourself. You know, oh, I couldn't get customers there. What do you couldn't get? You don't collect them from the road. You have to talk. You have to work. तो आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुझे कस्टमर्स ही नहीं मिले, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा, आपके साथ उनके साथ बात करना पड़ेगा, कस्टमर्स How आपके many बन जाएंगे। people do you need to talk to get 5 customers? You have enough time to go for it tomorrow. You might not make it. You might. You never know. आपको कितने लोगों के साथ बात करना पड़ेगा 5 कस्टमर बनाने के लिए? आपको पता है सारे नंबर्स, आप जाके कल भी बात कर सकते हो सुबह। I see how Khushbu closes customers. मैंने देखा है खुशबू जो है वो कैसे क्लोज करते I हैं hear how कस्टमर्स। she talks to customers, to potential customers. मैंने सुना है कि वो कैसे बात करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। I take advantage. I have the right now to take advantage. मैं उसका थोड़ा सा फायदा उठा देता हूँ। When I have a वो भी potential advantage। customer, I know I have 26 years of experience, but I have Khushbu that can talk to this potential person. She knows how to close. So guess what I do before these health talks? I say, Khushbu, I know you're busy. Can you just speak to this person because they're speaking Hindi, English, and I'm not sure. And the way they eat their Indian food, I don't understand. And she talks, tak, 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 tak. He's in. He or she are in. तो मेरे को पता है कि खुशबू जो है वो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये कस्टमर है, इनके साथ तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश का गड़बड़ हो रहा है, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? वो टक 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 बात करके एकदम से उनको क्लोज कर देते थे। Tomorrow you have an opportunity to take advantage like I do. तो कल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी है खुशबू के साथ How बात many करके। people are you going to promote like mad not to miss the health talk? आप कितने लोगों को एक हेल्थ टॉक में कल इनवाइट करेंगे? यहाँ पे जितने लोगों को आप ज्यादा बिठाएंगे उतना अपना फायदा होगा। If you are qualified for Power Hour, you be in Power Hour, but you can work on getting people to join the health talk. अगर आप क्वालिफाई करते हो पावर आवर का ट्रेनिंग, तो पावर आवर में बैठिए, बट आप लोगों को हेल्थ टॉक में बिठाइए। Khushbu doesn't need to convince you to use the products. I hope you already decided to use it. It's not for you. It's for potential customers. खुशबू को आपको कन्विंस करने का जरूरत नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स खाओ। आई होप आप ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, वो कस्टमर्स के लिए हेल्थ टॉक। Look at what the situation is in India, and I'm completing today's training in exactly 65 seconds. तो ये एक लास्ट स्लाइड है, मैं एग्जैक्टली 65 सेकंड्स में ये ट्रेनिंग आज का कंप्लीट करने वाला हूं। Look at India's situation. Look at India's health state. इंडिया का थोड़ा सा हेल्थ स्टेट जो है आप देख लीजिए। We are number 2 in the world, and Herbalife India has not even touched 0.5% of the population. हम इंडिया में, पूरा इंडिया, हर्बलाइफ इंडिया जो है नंबर 2 पे आता है पूरी दुनिया में, और हमने अब तक 0.5% लोगों को भी टच नहीं किया है। What will happen when we reach 1% of the population in India using the products? 1%. क्या होगा अगर 1% पूरे कंट्री का जो है वो अगर प्रोडक्ट यूज करना चालू करेगा तो क्या होगा? What money we will make, all of us that are serious, what incomes you will make, you can't even imagine. कितना पैसा आप कमाओगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सारे लोग। The question is, are you going to select yourself to be part of what's going to be known as the history of Herbalife India? सवाल ये है कि आप में से कितने लोग निर्णय लेते हैं कि मुझे हर्बलाइफ इंडिया का एक बहुत बड़े सक्सेस का पार्ट बनना है। That will make the difference. Now, the last 5 minutes, I'm sorry I took more time than I actually was supposed to, but if you have any important question you want to ask me about network marketing, the industry, please feel free to unmute yourself and ask. अगर आपको कुछ सवाल है, मेरा हो गया है अभी आज का ट्रेनिंग जो है वो, अगर आपको कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। Just take a few minutes. Anything you want to ask me about network marketing, you want to ask me about Herbalife plan. हर्बलाइफ प्लान के बारे में कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। All clear? You're either all confused or all clear. आप सारे के सारे एक तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं या फिर सब कुछ क्लियर है? Yes, Kiran, please ask. Hello, good evening, sir. How are you? I'm great. Besides my throat, all perfect. Yes. Actually, I have one question. See, when we speak about the Herbalife or network marketing, people not give it the positive, positive approach नहीं लगता है, you know. Khushbu, you help me. If I want, you can speak in Hindi. Khushbu will tell me. जब भी हम लोग है ना हर्बलाइफ के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम जब वर्क करते हैं
बिजनेस के लिए, तो हम लोग को पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिलता है, मतलब नेगेटिव सोच मिलता है। जैसे आज भी ऐसा है कि फ्लायर कर रहे थे तो हम लोग को बोलते थे ये मल्टीपल MLM है, नेटवर्किंग है, तो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया है, ऐसा फील कराते हैं समटाइम। What, Khushbu? So when we do work in the market, we get a lot of negativity. People tell, is this MLM, and look at us like we are doing some type of a crime. Okay, smile next. More work, more talk to people. I get the same. In my phone, I show sometimes Khushbu what people write. Sometimes they write in Hindi and it's bad words. I don't know. So I ask Khushbu, what is this? They said delete. It's a bad word. So I delete and block. I don't take it personally. I feel sorry for them because they just lost an opportunity to change their life. So I just move next. Because we are not smiling all the time. Actually. We are also human beings. Actually. So from where we buy the smile? Actually. You smile when someone is negative. You don't have to smile when someone is positive. That will come naturally. When someone says, this is the MLM, this is like that they do this, they do. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. You can give me the fly. You don't need it. Thank you. And you turn your face. You don't answer. You don't argue. Because 1.4 billion people in India, I don't want to waste 1 minute on someone who is wood. The only way we can deal with negative people if our mindset is strong. That happens only from reading books and listening to Mark and Jim. I'm telling you from experience. You see, I read, you ask Khushbu, I have a witness now. I don't have to, I every day read like a nag. I'm reading. Look at I'm in the middle of reading 3 books at the same time and feeding myself because I get negativity also. Sometimes I say, I don't want negativity. I'm making almost 30 lakh a month. I'm going to get my annual bonus in March. I make enough money. Why I have to deal? But in my mind, I say, German. I want to go founders later on. I want to travel the world even bigger. So I can't think about negative people. They are not an issue for me. Okay. Anyone else? Okay. So thank you so much, everyone, for attending and staying. Wow, you all stayed. Perfect. Congratulations. Thank you so much, Shreyas, for the translation. And thanks, Khushbu, for helping also whenever you could. And if you want to say anything, Khushbu, to promote the next one, tomorrow we have the BOP, the business seminar. Let's take it seriously. Thank you. The only thing I can do right now is unmute all. And guys, आप बोलिए कैसे हम थैंक यू बोल सकते हैं ये सर के एफर्ट्स जो हमारे लिए डाल रहे. So आप सभी को सर को थैंक यू बोलना है. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Really very good, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Glad to have you. all from our side, and see you all in the next SMC जहाँ पर हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं. So वहां पर आपको पहले से अरेंजमेंट करके रखिए, कैमरा ऑन करके बैठने का. तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. आपने शायद उनका नाम भी नहीं सुना है, पर उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो शी वाज अ फ्लाइट अटेंडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, तो फ्लाइट अटेंडेंट थे एंड शी इज मोर देन 12 years इन द बिजनेस. 12 साल से ज्यादा वो बिजनेस में है. मेघना थापा, उनकी है ना बहुत सारी मैगजीन्स में मैंने फोटोज देखे हैं. हर्बलाइफ के मैगजीन्स में उनके फोटोज है. हस्बैंड वाइफ मिलके ये काम करते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है आप सीखने वाले हैं ना, वो 10th चैप्टर आपको याद रहेगा. सो मेक श्योर 100% आपका अटेंशन दीजिए जैसे आज आपने दिया है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग दिस SMC lesson, and see you all in the taking advantage of the network marketing business and the system. Thank you so much. Goodbye. It can't be wrong.